नमस्कार एवरीबॉडी, गुड इवनिंग ऑल। प्लीज लेट मी नो कैन यू ऑल हियर एंड सी मी प्रॉपर्ली। आप सबको मेरी आवाज, मेरा चेहरा एंड ये स्क्रीन ठीक तरीके से दिख रही है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, प्लीज लेट मी नो कैन यू ऑल हियर एंड सी मी प्रॉपर्ली। गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हो एंड ऑल ऑफ यू आर इन योर फुल प्रिपरेशन मोड एंड दैट आप सब लोग मेरे साथ ज्योग्राफी एंजॉय कर रहे हो, राइट? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पीपीटी, कल की पीपीटी अपलोड नहीं हुई है, बताइए। Yesterday's PPT has not yet been uploaded. Yesterday's PPT has not yet been uploaded. Please give me a feedback. अरे, okay, I will take care of it. So आज की and कल की PPT एक साथ after the lecture I will instruct the office to is upload. Okay. मैं इस पे personally feedback लेता हूँ and आपको like today's and yesterday's PPT will be uploaded in one go. Okay, don't worry for that. I will make sure that it does not happen again and just after the lecture it gets uploaded. So I will have a word with the office and I will make sure कि अगले बार से ऐसा ना हो। ठीक है, चलिए। Good evening everybody. So I'm starting off from the part B of plate tectonics. So I'm starting off with convergent boundaries. एक बार सब लोग मेरे साथ होंगे तो Y कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। सर नॉट गेटिंग टेस्ट आफ्टर द क्लास। प्रिया मैम, देखिएगा कि जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट की जिम्मेदारी मैडम मेरी नहीं है। मैं केवल एंड केवल आपको पढ़ाता हूँ। आप एक बार मैनेजमेंट से बात कर लेंगे मैडम तो वो आपको हेल्प कर पाएंगे। सो इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा मैडम। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है आपके डाउट्स एड्रेस करना। तो आप मैनेजमेंट से बात कर लेंगे एक बार तो अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वो मेरे हाथ में ही नहीं है। Okay, I only have this reference portal to teach you to answer your difficulties, see your comments. बाकी मैडम मेरे हाथ में नहीं है। एक बार आप बात कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए। So I'm starting off with the part B. I'm starting off with the convergent interactions. तो मैं convergent interactions या फिर convergent boundaries के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज या फिर डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स। क्यों? बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आउट ऑफ द टू क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट, सर इसमें से कौन सा क्रस्ट सबडक्ट होगा, तो मैं कहूंगा कि इसमें से केवल एंड केवल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबडक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। ओनली द ओशनिक क्रस्ट कैन सबडक्ट। क्यों? बिकॉज ओशनिक क्रस्ट कैसा है? डेंसर है, हेवियर है। तो अगर मैं डाइवर्जेंट इंटरैक्शंस के बारे में आप सबसे बात कह रहा हूं तो हमारे पास तीन टाइप की होती है। वन, यू हैव ओओ टाइप, देन it will be followed by OC type and the last one will be CC type. So O meaning कि पहले ओशनिक बाउंड्रीज एग्जिस्ट करेगी, फिर एक ओशनिक मार्जिन कंप्लीटली सबडक्ट कर जाएगी। The oceanic plate will now come in contact with the continental slab and then when finally ये oceanic slab completely चली जाएगी नीचे, then the two continental slabs will come face to face and they will start interacting with each other. So, in convergent interactions, we have to remember that depending on which plate is heavier, which plate is number one heavier, which plate number two is denser, and number three, which plate is bigger. तो थर्ड वन इज कौन सी प्लेट बड़ी है, उस प्लेट का क्या होगा? यू विल बी हैविंग सबडक्शन ऑफ द प्लेट, बट सबडक्शन कौन से मार्जिन में होगा? सबडक्शन विल हैपन ओनली इन ओओ एंड ओसी। सीसी में सबडक्शन नहीं होगा। तो नाउ let us try to understand the different types of plate boundaries. So I'm beginning up with the first one, the OO boundary. So depending upon which oceanic plate is heavier, that plate will subduct. So let us try to have a case study. So let's say कि हमारी एक oceanic plate है. So this is one oceanic slab like this. And इसके नीचे एक दूसरी oceanic slab का subduction हो रहा. So you are having a
subduction of another oceanic slab beneath this plate. And ये जो प्लेट है, लेट्स से कि ये हमारे पास पैसिफिक प्लेट है. सो पैसिफिक प्लेट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेट एज वेल एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशनिक प्लेट. एंड लेट्स से कि ये वाली जो प्लेट है, दिस इज अवर फिलीपींस प्लेट. तो फिलीपींस प्लेट, ऑल ऑफ यू नो, इट्स अ माइनर प्लेट. ठीक है. तो नाउ इफ आई एम कंसिडरिंग ओ बाउंड्री, तो इस बाउंड्री पे फीचर्स क्या क्या रहेंगे? तो सर, जहां पर सबडक्शन हो रहा है, वेयर द सबडक्शन एक्चुअली इज ऑकरिंग, इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रेंच लोकेशंस. दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रेंच. सो एक प्लेट का सबडक्शन हो रहा है दूसरे प्लेट के नीचे में, तो हियर यू हैव अ कन्वर्जिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब. तो आपके पास कन्वर्जिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब है सर. ओके, we are getting it. So now the analysis is very simple. When you are having converging and descending limb, this is being taken into the mantle. In the mantle it is melting, it is getting destroyed. तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, तो अगर ये प्लेट इस प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, तो एट द लीडिंग एज ऑफ द अदर प्लेट, इस प्लेट के सेडिमेंट्स प्लास्टर होने लगेंगे ना. So if you are having this as the Philippines plate and this as the Pacific plate, अगर ये Pacific plate Philippines plate के नीचे subduct कर रही है, तो at the edge of the Philippines plate इस subducting plate के sediments plaster होंगे. So at the leading edge of the Philippines plate, you will be having what? You will be having plastering of the sediments of the subducting plate. तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा accretionary prism. क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा accretionary prism. So accretionary prism is basically the accumulation of sediments of the subducting slab at the edge of the other plate. Okay sir. Now अभी अगर ये प्लेट सबडक्ट हो रही है, सो ये सबडक्टिंग प्लेट के थोड़े से सेडिमेंट्स, दे विल बेसिकली कम अप, दे विल राइज अप, दे विल फ्रैक्चर द अदर प्लेट. एंड यहां पर ये फ्रैक्चर करके क्या बना लेंगे सर? यहां पर ये फ्रैक्चर करके न्यूमरस वोल्केनिक आइलैंड्स बना लेंगे. सो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? व्हाट दिस विल बी कॉल्ड? तो दिस विल बी कॉल्ड एज वोल्केनिक आर्किपेलागोस. तो आर्किपेलागोस मीनिंग दैट यू हैव long linear chain of what? Long linear chain of volcanic islands. So if we are plotting the regions कि regions क्या क्या है and इन regions को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये volcanic archipelago का पीछे का जितना भी समंदर बाकी रहेगा, whatever sea will be remaining before that, this will be called as marginal sea. This will be called as marginal sea. And ahead of volcanic basically आर्किपेलागो, जो भी लैंड बचती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फोरआर्क. तो ahead of volcanic archipelagos you have forearc. At the back of volcanic archipelago you have marginal seas, and this is also referred to as back arc. इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं back arc. तो सर, do we have such kind of thing? तो फोरआर्क में क्या क्या रहेगा? फोरआर्क में आपके you will be having accretionary prism, you will be having the trench locations, and you will be having the archipelagos themselves. So sir, do we have any example of this? Yes. तो अगर मैं आप सबको बेसिकली लेके जा रहा हूं द ईस्ट पैसिफिक वर्सेस द वेस्ट पैसिफिक, तो जो आपका वेस्ट पैसिफिक है, जो आपकी बेसिकली रीजन शुरू होती है कहां से? फ्रॉम द बेरिंग सी अप टू द सदर्न पार्ट. तो दिस इज योर अलूशियन ट्रेंच. यहां पर आपके ये अलूशियन आइलैंड्स हैं, इसके आगे में अलूशियन ट्रेंच है, एंड दिस इज योर बेरिंग सी. तो अलूशियन आइलैंड्स, अलूशियन ट्रेंच एंड बेरिंग सी. देन सर, दिस इज सी ऑफ ओखोट्स. दिस सी ऑफ ओखोट्स. सर, हियर यू हैव कुरिल आइलैंड्स, एंड इसके आगे यू हैव कुरिल ट्रेंच. Sir, all the four Japanese archipelago, Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu, 4 volcanic archipelagos है सर जापान के. So you have the volcanic archipelagos of Japan,
इसके आगे आपकी जापान की ट्रेंच है। एंड सर ये जो समंदर है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट सर? दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली द सी ऑफ जापान। This will be called as what? This will be called as Sea of Japan. Okay, sir. सर दीज आर योर फिलीपींस, ये आपका फिलीपींस है। सर फिलीपींस के आगे आपकी फिलीपींस की ट्रेंच है। सर ओवर हियर वी हैव द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, वी हैव द मरियाना ट्रेंच और चैलेंजर डीप। सो चैलेंजर उस जहाज का नाम था जहां पे सेल करके साइंटिस्ट गए थे यहां पर। So the deepest point on earth, and sir इसके पीछे में you have the South China Sea, sir. Okay, and if we are trying to appreciate which trench locations you have over here, तो आपको यहाँ पे पास कर्मडैक ट्रेंच है, टोंगा ट्रेंच है, आप सबने लोकेशंस पढ़े होंगे। एंड इसके पीछे में then you have the Coral Sea. So this is your Coral Sea. So if I'm discussing with you all the subduction margins of the West Pacific, तो आपको तीन चीजें डिस्टिंक्ट याद रखनी है। वोल्केनिक आर्किपेलागोस, द ट्रेंच लोकेशंस, एंड जहां पर ये सबडक्शन होगा उसके लीडिंग एज पे आपका क्या होगा? आपका एक्रेशनरी प्रिज्म का अक्यूमुलेशन सेडिमेंटेशन ऑन होगा। तो बैक आर्क में आपके पास है मार्जिनल सीज। सो दिस इज योर साउथ चाइना सी, दिस इज योर ईस्ट चाइना सी। ऊपर जा रहे हो तो आपके पास सी ऑफ जापान है, ओखोट्स है, बेरिंग है। तो दीज ऑल ऑफ यूर आर बेसिकली द मार्जिनल सीज। कहां के? वेस्ट पैसिफिक के। अभी ईस्ट पैसिफिक में कहानी थोड़ी बदल जाती है, बिकॉज जैसे आप ईस्ट पैसिफिक में जाओगे तो आपकी मार्जिन कैसे हो जाए। तो आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग ओसी मार्जिन। तो ओसी इज बेसिकली द सेकेंड इन द सीक्वेंस कि सर अभी एक ओशनिक प्लेट कंप्लीटली सबडक्ट हो चुकी है, एंड सर जो बची हुई प्लेट है अभी ये दूसरे कॉन्टिनेंटल स्लैब के कांटेक्ट में आ रही है। तो लेट्स से दिस इज योर कॉन्टिनेंटल स्लैब लाइक दिस। तो इमेजिन करते हैं कि ये हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट है, एंड लेट्स से कि यहां पर यू आर हैविंग बेसिकली द सबडक्शन ऑफ अ ओशनिक प्लेट। तो लेट्स से कि ये आपके साउथ अमेरिका के वेस्ट शोर की प्लेट है, दिस इज योर नास्का प्लेट। So now in this what is happening is that you are having a subduction of a oceanic plate underneath the continental slab of South America. तो अभी आपकी एक ओशनिक बाउंड्री किसके नीचे सबडक्ट कर रही है? कॉन्टिनेंटल स्लैब के नीचे। एंड दिस इज योर आर्ग्युएबली वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंच लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका हो गया बेसिकली द पेरू चिले ट्रेंच। सो दिस इज योर पेरू चिले ट्रेंच। नाउ द सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर। सर जब ये सबडक्शन हो रहा है तो इसके पीसेस जो है ये पीसेस यहां पर प्लास्टर होंगे, बट यहां पर चीजें डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यहां पर ये सबडक्टिंग स्लैब के पीसेस दे विल बी गेटिंग चर्प्ड, दे विल बी गेटिंग ब्रोकन। बट सर इसी के साथ साथ क्या होगा? सर इसी के साथ साथ कॉन्टिनेंटल स्लैब के भी तो पीसेस टूटेंगे ना। अगर एक ओशनिक स्लैब दूसरे कॉन्टिनेंटल स्लैब के नीचे सबडक्ट कर रही है तो ओशनिक स्लैब के पीसेस तो टूटेंगे ही टूटेंगे, बट कॉन्टिनेंटल स्लैब विल आल्सो गेट चर्प्ड, इट विल आल्सो गेट ब्रोकन। एंड प्लस इसमें सोने पे सुहागा क्या होगा? इस पे सोने पे सुहागा होगा ये ग्रीन कलर। तो व्हाट इज दिस ग्रीन कलर? सो द ग्रीन कलर इज बेसिकली योर ओल्डर एक्रेशनरी प्रिज्म। ये आपका ओल्डर एक्रेशनरी प्रिज्म है उस वक्त का जब बाउंड्री कैसी थी? ओओ टाइप की। सर what is this blue part? So blue part is basically you are subducting oceanic slab। तो फिलहाल जो स्लैब सबडक्ट कर रही है वो स्लैब। एंड सर ये जो पिंक पार्ट है ये क्या है? तो दिस इज योर ब्रोकन पीसेस और चक पीसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लैब। तो ये तीनों मिला के एक chaotic मिक्सचर बना लेंगे। So the new accretionary prism, this will be called as what? This will be called as melange। तो जो ओसी बाउंड्री का एक्रेशनरी प्रिज्म रहेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे मेलांज। एंड
यही मेलांज ऊपर अपलिफ्ट होके क्या बना देगा? So this melange will get uplift and you will be having the formation of the longest mountain ranges on land on earth. You will be having the formation of Andes. तो अगर हम लोग वेस्ट पैसिफिक छोड़ के अगर हम लोग ईस्ट पैसिफिक में जाते हैं, इफ यू आर गोइंग इन द ईस्ट पैसिफिक, सो दिस इज योर साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर चल क्या रहा है सर? यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पर आपकी नास्का प्लेट है, एंड दिस इज योर वन बिग ट्रेंच सिस्टम. दिस इज कॉल्ड एज द पेरू चिले ट्रेंच सिस्टम. अटाकामा डेजर्ट का नाम है बेटा, ट्रेंच का नाम पेरू चिले है. तो यहां पर आपको ऊपर से नीचे तक एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज अपलिफ्ट होते हुए मिल रही है. दिस इज योर एंडीज, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड on the earth. So these are your Andes. So Andes are nothing but what? Andes are nothing but uplifted melange. इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग कहेंगे uplifted melange. So सर जाहिर सी बात है कि अगर ये ओशनिक स्लैब नीचे जा रही है, सो इससे भी सेडिमेंट्स टूट के ऊपर आएंगे. यस. तो अगर मैं आप सबको साउथ अमेरिका के वेस्टर्न बॉर्डर पे लेके जा रहा हूं, तो सर फिर से यहां पर आपको एक्टिव वोल्केनिज्म मिलेगा ना? यस. तो विल बी अगेन हैविंग एक्टिव वोल्केनिज्म इन साउथ अमेरिका ऑल्सो. तो अगर मैं साउथ अमेरिका में जा रहा हूं तो आपको यहाँ पे सीरीज ऑफ वोल्केनिक पीक्स मिलते हैं. जैसे यहाँ पर दो पीक्स है, दे आर कॉल्ड एज कोटोपैक्सी एंड यू हैव अनदर पीक कॉल्ड एज चिम्बोराजो. एंड सर दुनिया का जो सबसे टॉलेस्ट वोल्केनिक पीक है, इट इज कॉल्ड एज ओजस डेल सैलाडोस. सो ओजस डेल सैलाडोस इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वोल्केनिक पीक. तो ये भी आपको कहां मिल रहा है? साउथ अमेरिका में मिल रहा है. बट नाउ अभी ध्यान में क्या रखना है हमें? ध्यान में ये रखो कि जब भी आपका सबडक्शन हो रहा है, तो दिस इज योर बसाल्ट. बसाल्ट क्या हो रहा है? बसाल्ट नीचे जा रहा है. ध्यान में रखिएगा, मेटामॉर्फिज्म है ये. तो यहां पर बसाल्ट कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो रहा है, यहां पर बसाल्ट कंप्लीटली बर्न ऑफ नहीं हो रहा है. बसाल्ट इज बेसिकली पार्शियली मेल्टिंग. Basalt is happening doing what? Basalt is basically partially melting. So whenever you have subduction margins, so the basalt partially melts and it gets converted into what? And it gets converted into andesite. Hence the name Andes. Same thing is happening in the OO boundary. ये जो basaltic oceanic slab आपकी पिघल रही है, ये partially melt होके क्या होगा? ये पार्शियली मेल्ट होके कन्वर्ट होगा किसमें? ये पार्शियली मेल्ट होके कन्वर्ट होगा एंडेसाइट में. सर इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो द मीनिंग ऑफ दिस इज वेरी सिंपल. द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट इफ आई एम कंसिडरिंग द मार्जिन्स ऑफ पैसिफिक विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, अगर मैं ये पैसिफिक की पूरी ये मार्जिन कंसिडर कर रहा हूं, तो इस मार्जिन में हो क्या रहा है? All of these margins you have basically subduction margins. यहां पर ईस्ट में ये OC टाइप की है, यहां पर वेस्ट में ये OO टाइप की है. So subduction is happening. The oceanic basaltic slab is partially melting and getting converted into what? Andesite. So all eruptions are necessarily what? All eruptions, they are necessarily andesitic eruption. ये eruptions कैसे हैं? They are necessarily andesitic eruptions. तो सर eruptions अगर andesitic है, so लावा रुक रुक के आगे बहेगा, and sir they will become very violent. And that is why sir this region of Pacific where you have subduction boundaries, ध्यान में रखिएगा, पैसिफिक के यहां पे तो पैसिफिक की मॉर सिस्टम है. So this is where we actually have the Moor system of Pacific in the southwest. Southwest Pacific में पैसिफिक की मॉर है, बट वेस्टर्न, नदर्न, ईस्टर्न इज कंप्लीट सबडक्शन बाउंड्रीज. तो यहां पर जितने भी इरप्शंस है, जापान में जाइए, फिलीपींस में जाइए, अभी बाली में वोल्केनो एक्सप्लोड हुआ ना लास्ट वीक में, पूरे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए.
So all of the eruptions here are necessarily andesitic eruptions, and that is why they become very violent. And that is why this region is known as what? This region is known as Pacific Ring of Fire, or it is called as Circum-Pacific Belt. It is called as Circum-Pacific Belt of earthquakes and volcanism. It is called as Circum-Pacific Belt of earthquakes and volcanism. Why? Because here the eruptions are all necessarily andesitic. ये बात ध्यान में रखना, बसाल्ट पार्शियली मेल्ट करके क्या बना देगा? बसाल्ट पार्शियली मेल्ट करके एंडेसाइट बनाएगा, इसलिए यहाँ के जो इरप्शंस है they become very 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 violent. Okay, now after this the next boundary we have, the last in the sequence, is you have a boundary called as CC boundary. Now in CC boundary what is happening? So sir, आपके oceanic slabs they have completely subducted. So now you have two continental slabs basically coming face to face, and basically doing what? And colliding. तो जाहिर सी बात है, जब दो कॉन्टिनेंटल स्लैब्स आके टकरा रही है तो कोई भी स्लैब एक में के नीचे नहीं जा सकती है. बेस्ट यू कैन हैव इज अंडर थ्रस्टिंग. तो दे कांट सबडक्ट, दे कैन जस्ट अंडर थ्रस्ट. तो इस वजह से हियर व्हाट इज हैपनिंग? तो सर हियर योर compressive forces are the strongest. Here your compressive forces are the strongest. ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है. इसी वजह से यहां पर क्या हो गया सर? यहां पर आपके सेडिमेंट जो है, ऑल ऑफ द सेडिमेंट्स दे विल गेट अपलिफ्टेड इनटू व्हाट? So you will be having folds of sedimentaries. इसी वजह से whenever you will be having CC boundary, a very typical feature of CC boundary is going to be fold mount. Why? Because यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका intense compression होगा. Because of that you will be always getting fold mountains at the confluence of the CC boundary. अभी मैं आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क जरूर कीजिएगा. मैं श्योर तो नहीं हूं ये आएगा या नहीं आएगा, बट मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप सबके लिए होमवर्क है. आप मुझे टाइप्स ऑफ फोल्ड्स बताएंगे. सर फोल्ड्स के कौन से टाइप्स होते हैं? रिकम्बेंट फोल्ड्स, ओवरटर्न फोल्ड्स, आइसोक्लिनिकल फोल्ड्स, ये कौन से टाइप ऑफ फोल्ड्स है? दिस आई एम जस्ट गिविंग यू एज अ होमवर्क. सो हार्डली 5 मिनट का काम है, हर कोई ये काम करेगा. तो नाउ अगर मैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूं तीनों टाइप की बाउंड्रीज को, इफ आई एम कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग ऑल 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, OO, OC एंड CC, एंड एक तरफ मैं लिख रहा हूं वोल्केनिज्म, एक तरफ मैं लिख रहा हूं अर्थक्वेक्स. तो सर क्या OO बाउंड्री में वोल्केनिज्म है? जी हां, वोल्केनिज्म है. क्यों? बिकॉज यहां पर सबडक्शन है. सर यहां पर क्या वोल्केनिज्म है? हाँ है, बिकॉज यहां पर भी सबडक्शन है. बट सर क्या CC बाउंड्रीज में सबडक्शन है? नहीं. तो सर CC बाउंड्रीज में वोल्केनिज्म मिलना इम्पॉसिबल है सर. तो हियर देयर इज नो सबडक्शन. बिल्कुल सर. सर क्या OO बाउंड्रीज में अर्थक्वेक है? हाँ है. सर OC बाउंड्रीज में अर्थक्वेक है? हाँ है. एंड सर क्या CC बाउंड्रीज में अर्थक्वेक है? बिल्कुल है. बट सर हमें ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी इज गुड, इंटेंसिटी अच्छी है. बट सर यहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी. हियर इंटेंसिटी विल बी वेरी वेरी हाई. व्हाई? बिकॉज यहां पर प्योर कंप्रेशन चल रहा है. तो दो कॉन्टिनेंटल स्लैब्स एक मेघ से आके टकरा रहे हैं. इस वजह से यहां के जो अर्थक्वेक्स है दे विल बिकम द मोस्ट वायलेंट अर्थक्वेक्स. तो जैसे
अभी आप देखोगे कि सीसी बाउंड्री कहां पर है, तो अफ्रीका एंड यूरेशिया, सऊदी अरेबिया एंड यूरेशिया, इंडिया एंड यूरेशिया। तो हिमालयस में अभी एक मेजर अर्थक्वेक आना बाकी है। लाइक द लास्ट मेजर अर्थक्वेक हैपेंड इन हिमालयस इन 1919 1918। अभी 100 साल से ज्यादा हो गए हैं कि अभी तक हिमालयस में कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया है। So now everybody is estimating that yes, in Himalayas we will be having a major earthquake coming. So compare and contrasting this becomes very important. So this is your second type of boundary जिसे हम लोग कहते हैं convergent interactions. And now let us move towards the third type of boundary, third and fourth type of boundary, which is called as the transform boundary, or we have another type of boundary which is recently is in news and this UPSC has not yet asked. So number D, so मैं यहाँ पे 2025 लिख रहा हूँ, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. This is called as the transform boundary zone. This is called as what? This is called as the transform boundary zone. तो सर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दुनिया में कहाँ एग्जिस्ट करती है? Where do we have the existence of the transform boundary in the world? Shaurya sir, I will do it in the break. Don't worry. अभी नहीं करता हूँ, ब्रेक में पूरा रिपीट कर दूंगा आपके लिए. Don't worry. तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री सर दुनिया में एक यहां पर एग्जिस्ट करती है. So this is where you have the transform boundary. So this is your North American plate and this is your which plate? So this is this plate over here. It is called as Juan de Fuca. And this plate over here, it is called as North American plate. तो इसके वजह से, इस घर्षण के वजह से यहां पर क्रैक आ गई है, यहां पर फॉल्ट आ गई है. So what is the name of this fault? Sir, the name of this fault is called as San Andreas fault. तो सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, बे एरिया जिसे हम लोग कहते हैं, इट इज प्रोन टू इंटेंस अर्थक्वेक. सो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में भी अर्थक्वेक आएगा, बट यहां पर वोल्केनिज्म नहीं रहेगा. यू वोंट बी हैविंग वोल्केनिज्म. नाउ सर, व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जोन? तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जोन इज दैट जोन वेयर यू हैव सो मच कंप्रेशन, इतना ज्यादा कंप्रेशन है कि यहां पर जो स्लैब्स है, slabs, they are broken into very small pieces. They are broken into basically very small pieces. They are basically broken into very small pieces. बहुत ही small pieces में इन्हें तोड़ा जाता है. इतना ज्यादा कॉम्प्रेसिव है. सर ये कहां पे हो रहा है? तो सर इफ यू सी दिस मेडिटरेनियन रीजन, अगर आप इस मेडिटरेनियन रीजन को देखोगे तो सर नीचे से आपकी नूबियन प्लेट है जो फोर्स लगा रही है, सर ऊपर से आपकी यूरेशियन प्लेट है. तो इस वजह से यहां पर क्या है, इस वजह से आप यहां पर इतने छोटे छोटे टुकड़े हो रखे हैं इस छोटे से रीजन के कि हियर यू हैव न्यूमरस माइक्रोप्लेट्स. तो हियर यू हैव व्हाट? हियर यू हैव न्यूमरस माइक्रोप्लेट्स. बहुत ही छोटे छोटे प्लेट्स हो रखे हैं. एंड ये सारे प्लेट्स क्या करना चाह रहे हैं? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक आया था टर्की में. तो हियर यू हैव अ स्मॉल माइक्रोप्लेट कॉल्ड एज Anatolian plate. So you have a small microplate called as Anatolian plate of Turkey. तो यहां से हर एक प्लेट करना क्या चाह रही है? सर यहां से हर एक प्लेट जो है ना, ये बाहर निकलना चाह रही है. तो दिस इज कॉल्ड एज escape tectonics. So fairly new word, please remember this word, important for 2025. This is a fairly new word called as escape tectonics. सर इतना ज्यादा कंप्रेशन है, इतने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो रखे हैं कि सर ये सारे टुकड़े यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो टर्की में अर्थक्वेक आया, ये अर्थक्वेक क्यों आया? बिकॉज नीचे से अफ्रीकन प्लेट, ऊपर से यूरेशियन प्लेट एंड ये छोटी सी आपकी एनाटोलियन माइक्रो प्लेट है, ये बेचारी यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है. तो इस वजह से यू हैड अ वेरी सीवियर अर्थक्वेक इन टर्की. अब ये तो
अभी जब मैं अर्थक्वेक्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज पैनकेक कोलैप्स, व्हाट इज सॉफ्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर. तो इट इज प्योरली द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कि इतने लोगों की जान जाती है कि आज भी 21st सेंचुरी में जापान में जहां पर डेली कम से कम 300-400 अर्थक्वेक आते हैं. लाइक आई एम मैं तो ये कम स्केल पे कह रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा अर्थक्वेक आए. डेली जापान में 300-400 अर्थक्वेक छोटे मोटे कॉमन है. वहां पर एक भी लोग नहीं मरता है, नॉट इवन वन सिंगल पर्सन डाइज. एंड यहां पर छोटा सा अर्थक्वेक क्या आ गया, 7.2 6.8 रिक्टर स्केल का, 50,000 से ज्यादा लोग मर गए. तो दिस इज कंप्लीट एपैथी फ्रॉम द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कि हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक नहीं बना पाए. एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो. इंडिया में तो आप देख ही रहे हो क्या हालत हो रखी है, राइट, नेशनल कैपिटल की. तो जब मैं आपको अर्थक्वेक्स पढ़ाऊंगा तो ध्यान में रखना कि दिस इज कॉल्ड एज एस्केप टेक्टोनिक्स. ये फेयरली न्यू वर्ड है हमारे डिक्शनरी में. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वाटरमेलन सीड इफेक्ट. वाटरमेलन सीड इफेक्ट मीन्स जो तरबूजा रहता है, इफ यू स्टार्ट स्क्वीजिंग इट तो उसके सीड्स पॉप आउट होते हैं. So it is also referred to as watermelon seed effect or escape tectonics. The fourth type of zone that we have, especially in the Mediterranean region, this is called as the escape tectonics. So guys, here we basically summarize the four type of plate boundaries that we have. But now we have to understand a very important thing. हमें अभी limitations समझने हैं. सर limitations किसके समझने हैं? So we have to understand the limitations of MTT. कि मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी के भी क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं? जी हाँ, मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी के भी लिमिटेशंस है. सर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी? सर वही बात जो अल्फ्रेड वेगनर की थी, वो बात अभी भी तो लागू है. सर ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है? What is the driving mechanism? You are saying, sir, that we have the convection current hypothesis, but is the convection current hypothesis proved? Is Arthur Holmes really explaining to you why do we have the mantle plumes? So we still don't know that what is the reason behind the mantle plumes. So driving mechanism is still eluding. The driving mechanism basically still eludes. We don't know what is the actual driving mechanism. Okay, sir. Then what is the second major flaw or limitation of MTT? जो अभी तक हम लोग बेसिकली आंसर नहीं कर पाए हैं. तो अगर आप बेसिकली MTT को देखोगे तो हम लोग ये कहते हैं कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है हमारी, अवर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, दे आर ब्रिटल, टूट जाती है. दे आर बेसिकली कोल्ड, उतनी ज्यादा ये गर्म नहीं है. एंड दे ब्रेक इजीली, दे ब्रेक, दे स्ट्रेच. ठीक है, ये सारा होता है. बट अगर आप इसकी एग्जैक्ट प्रोसीजर देखोगे तो डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्मेशन एक्चुअली टेक्स हाउ मेनी इयर्स? डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्मेशन एक्चुअली टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स. एक्चुअली टेक मिलियंस ऑफ इयर्स. तो हम जो ये अज्यूम कर रहे हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट ब्रिटल है, कोल्ड है, ये ब्रेक कर जाती, ये कर जाती है, दिस अजम्पशन इज नॉट राइट. व्हाई? बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू एक्चुअली डू दिस. तो हमने केवल एंड केवल हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिया कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ये ब्रोकन है, चप्ट है. असल में इन्हें टूटने के लिए, इन्हें बनने के लिए बिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं. तो we are majorly focusing on what? We are majorly focusing just 200 million years ago. उसके पहले का हम फोकस नहीं कर रहे. So this is basically our major focus. उसके पहले का हमारे पास फोकस नहीं है. Okay sir. And now sir, if we compare and contrast divergent boundary versus convergent boundary, तो सर इन दोनों में से एक्टिव बाउंड्री कौन सी है? Like if you ask me that on earth which boundary is more active, so I will say that sir, on earth divergent boundary is more active as compared to convergent boundary. So convergent boundary is not that active on earth, not that active in the sense कि sir convergent boundaries
जहां पर ओशनिक फ्लोर सबडक्ट हो रहा है, ये केवल एंड केवल सर पैसिफिक में हो रहा है। बाकी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आपकी कन्वर्जन बाउंड्री जहां पर सबडक्शन हो रहा है एक्टिव नहीं है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट द ओशन फ्लोर क्रिएशन रेट, द ओशन फ्लोर क्रिएशन रेट is not corresponding to ocean floor destruction rate. It is not corresponding to the ocean floor destruction rate. So, sir, is the Earth's surface area constant? Is the surface area of Earth constant? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है एंड इसका जवाब है ना। Earth's surface area is not constant. If we compare and contrast the surface area of Earth from basically approximately 300-400 million years ago, the Earth's surface area has actually increased. So this is a very important limitation of modern tectonics theory, that it still can't explain us how actually this differentiating rates of convergent boundary and divergent boundary are actually manifesting on Earth. तो इसके लिए हमें और millions of years रुकना पड़ेगा जब हमारे पास proper data आएगा। So still we are lacking what? Technological advancement. And the last and the most important limitation of MTT, हर एक चीज हम लोग केवल 200 मिलियन ईयर्स की बता रहे हैं, बट सर व्हाट अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ फ्रॉम 4.5 बिलियन ईयर्स अप टिल लेट्स से 300 मिलियन ईयर्स अगो? इसका क्या सर? जो हमारे पास प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री है, जो अर्थ की मेजर टाइम स्केल है, इसका क्या हमारे पास डेटा है? सर व्हाट अबाउट द प्रिमिटिव क्रस्ट ऑफ अर्थ? व्हाट अबाउट द प्रिमिटिव क्रस्ट ऑफ अर्थ? क्या मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी धरती के पहले क्रस्ट के बारे में हमें बता पा रही है? नो सर, दिस हिस्ट्री वी टोल्ड डोंट हैव। इसका मतलब क्या है? that modern tectonics theory is not incorrect. Please understand this, that it is not incorrect. ये गलत नहीं है। Modern tectonics theory is rather incomplete. इसे और जवाब देने पड़ेंगे। We'll have to have more understanding of this. It is rather incomplete. So now a new theory is coming into play. अभी ये थ्योरी पे काम चल रहा है, अभी तक ये थ्योरी आई नहीं है। इट इज कॉल्ड एज जीबीटी, इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल टेक्टोनिक्स थ्योरी और माइक्रोप्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। दिस इज द फ्यूचर ऑफ एमटीटी। ये एमटीटी का क्या है? फ्यूचर है। ग्लोबल टेक्टोनिक्स थ्योरी और माइक्रोप्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इसे हम लोग सर्ज टेक्टोनिक्स भी कहते हैं। वी कॉल दिस एज व्हाट? वी कॉल दिस एज सर्ज टेक्टोनिक्स। तो ये एमटीटी का क्या है? फ्यूचर है। तो अगर प्रीवियस में पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि एमटीटी के क्या क्या लिमिटेशंस है एंड इन द फ्यूचर काम किस पे चलेगा? माइक्रोप्लेट्स पे। तो हम लोग जो ये बड़े बड़े प्लेट्स लेके चल रहे हैं, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, नहीं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स पे जाइए, छोटे छोटे पार्ट्स को समझिए कि कैसा है, क्या है, तो फिर आपको समझ पाएगा कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या चीजें कैसे कैसे अफेक्ट कर रही है। So these are your limitations of modern tectonics. So guys, here I finish off the story from the beginning, जहां से हमने origin of universe से शुरू किया था, एंड आज हम लोग हमारा प्रेजेंट डे वर्ल्ड समझ पा रहे हैं कैसा है। तो नाउ आई एम पाइवोटिंग माई सेल्फ। अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं विथ वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स, बिकॉज ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो यूपीएससी ने एग्रावेटेड लेवल पे पूछे हैं मेंस में। एंड यूपीएससी की खासियत रही है कि जो यूपीएससी मेंस में पूछती है वो 2-3 साल बाद उसे प्रीलिम्स में घुमा फिरा के पूछ लेती है। So now I'm going in depth discussion with you all with the types of volcanoes, the types of earthquakes and the features associated with this. So now basically remember, अगर मैं आप सबके साथ लैंडफॉर्म्स डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दे रहा चाह रहा हूं। तो आज आप सबको 2-3 पीडीएफ्स मिलेगी मेरी तरफ से। मैंने आपसे कहा था कि आपको क्लास स्पेसिफिक पीपीटीज एंड क्लास स्पेसिफिक लेक्चर हैंडआउट्स मिलेंगे।
Sir, in quadratic convergence seen in all the three cases? Yes, all these cases you are having convergence boundary. तो ध्यान में रखिएगा कि लैंडफॉर्म्स जो है हमारे पास दो टाइप्स के आएंगे. तो यू कैन हैव स्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म्स और यू कैन हैव इरोजनल landforms. So erosional landforms meaning that they are created by what? They are created by agents of denudation. तो agents of denudation क्या क्या होंगे बताइए मुझे. ये सब आपने पढ़ा होगा, exogenetic forces versus exogenetic forces. And structural landforms will be the landforms made by what? Will be the landforms made by plate tectonics predominantly. There will be landforms made by volcanism. And there will be landforms made by rifting and faulting. बताइए. तो मुझे आप एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन क्या क्या है ये बताइए कि कौन से एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन है हमारे पास में. क्विकली टेल मी. कौन से एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन है, कौन से एजेंट्स इरोजन कॉज कर सकते हैं. टेल मी. तो व्हाट फैक्टर्स यू कैन हैव व्हिच कैन कॉज इरोजन ऑन द लैंड, जिन्हें हम लोग एक्सोजेनेटिक भी कहेंगे. यस. So you can have agents of denudation like what? You can have agents of denudation like wind. You can have agents of denudation by rivers. You can have agents of denudation by glaciers. You can have agents of denudation by water. And you can have agents of denudation by sea waves. ठीक है. तो ध्यान में रखना, आज आप सबको मेरे तरफ से इसका हैंडआउट मिलेगा. You will be getting a handout from me on this. ठीक है. ये हैंडआउट आप रिवाइज कब करोगे? यू विल रिवाइज दिस इन व्हेन? यू विल रिवाइज दिस इन अप्रैल ऑफ 2024 सॉरी 2025. ध्यान में रखोगे. इसे रिवाइज कब करना? अप्रैल 2025. ये सारा रट्टाबाजी वाला है. आपको बस नाम पता होने चाहिए कि विंड से क्या बनता है, वाटर से क्या बनता है ना. स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेक्टमाइट्स, सैंड ड्यूम्स, वही सारी घिसी पिटी चीजें. ध्यान में रखना, डोंट वेस्ट योर टाइम टुडे इन एनालाइजिंग द लैंडफॉर्म्स बिकॉज यूपीएससी इसमें से एक हाथ सवाल पूछती है, वो भी काफी आसान रहता है. विल आर यू ऑल अप्रिशिएटिंग दिस? सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस. अभी टाइम इस पे लगा. सबको ध्यान में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? देखिए, जमाने के साथ बदलना काफी जरूरी है. ठीक है. तो ज्योग्राफी के साथ बदलना है तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं. तो ये अभी नहीं करना है. ये आपको कब करना है? ये आपको अप्रैल 2025 में करना है. लैंडफॉर्म्स एक दिन में बैठ गए, पूरा देख लिया. तो डोंट बेसिकली शेड आउट योर वेरी प्रेशियस टाइम इन डूइंग दिस बिकॉज ये वैसे भी मेंस का पार्ट है. प्रीलिम्स में कभी पूछती नहीं है यूपीएससी. बट क्या है ना, लोग वो जीसीलियन पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर बोल देते हैं अरे सर ये है वो है. So don't go for that. Don't fall for the trap. Is this understood by everybody? जब तक हर कोई yes कमेंट नहीं करेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. Comfortable? चलिए. So now let us start up with the landforms associated with volcanism. बिकॉज वोल्केनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. हमें टाइप्स ऑफ वोल्केनोस पढ़ने हैं एंड इससे एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे. सुदर्शना मैम वो ऑफिस से अपलोड नहीं हुई है, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया है. मैं आज की पीपीटी, ये सारे हैंडआउट्स एंड कल की पीपीटी पूरा का पूरा आपको हो जाएगा. ठीक है. दे विल बी प्रोवाइडेड Samantha ma'am, they will be provided in the lecture handout section. Okay, don't worry. So you will be getting all of this from my end. But please remember, इसे अभी नहीं पढ़ना. You will have to do this in April of 2025, not now. Don't waste your time. It's not of any consequence. Okay. So when I'm talking about volcanism, now volcanism is what? So it's basically a process in creation. It's process in basically, so you are having creation of magma, then you are having movement of magma. You are having creation, you are having movement, then you will be having subsequent eruption of magma,
And along with the eruption, you can also have what? You can also have solidification. Solidification of magma, right? So you can have all of this together. So this is basically the definition of volcanism, of what? Of either magma, so volcanic material inside the earth, or you can have lava. But now if we really want to understand what volcanism actually is and how can we classify the different types of volcanoes that we have, so now how should we do this? So volcanism can be better understood in the classification of volcanoes that we have. So in order to understand volcanism, we have to understand what? We have to understand the types of landforms created by it. So the types of landforms which are created by volcanism, they are referred to as what? They are referred to as volcanoes. And volcanoes, they are classified into four different genera, or they can be understood by understanding how many? Four classification types. Four classification types. So let us try to understand the four classification types of volcanoes. So the first one, number A, it is on the basis of periodicity of eruption. On the basis of periodicity of eruption. So periodicity of eruption, meaning what? That, sir, your volcano is either active, or sir, your volcano is either dormant. Dormant means it has not erupted in the last 50 to 100 years, or sir, the volcanic vent has ceased to exist. There is no source of magma. Your volcano has become extinct. So you can have, on the basis of periodicity of eruption, how often it is erupting. You can have active, you can have dormant, or you can have extinct. Then number B, you can have on the basis of type of magma which is associated with it. So type of magma हमारे पास कौन सा हो सकता है? So either you can have andesitic magma. So andesitic magma is very sticky, is very viscous. So they become violent because andesitic magma is viscous. Whereas if you are having basaltic magma, if you have basaltic magma, so basaltic magma is very fluidic. It basically flows like a river. Therefore, the eruptions are very quiet. You won't be having very big eruptions out there. बट सर इससे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी एक काम करते हैं कि हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन के हिसाब से समझते हैं. Let us try to understand the types of volcanoes on the basis of intensity of eruption. So on the basis of intensity of eruption, the volcanoes, they are further classified into four types. So number one, you have, it is called as Hawaiian type. Number two, you have something called as Strombolian type. Number third, you have something called as Volcanian type. Number third, you have Volcanian type. And number fourth, you have Pelian type. Number fourth, you have Pelian type. Sir, what do you mean by this? Can you please explain us quickly? चलिए, so एक करते हैं. And I will quickly open up the images and showcase to all of you because I know कि ये थोड़ा सा आप सबके लिए new territory है. तो मैं सबके photos पहले open कर देता हूँ. Yeah. So see, this is your first type of volcano. This is called as Hawaiian type of volcano. So this is hotspot based volcanism. Hotspot based volcanism meaning that here you directly have eruptions coming from the deep mantle and core boundary. So Hawaiian type of eruptions will always be having basaltic outflows. So this basalt, it will start flowing like a river. Okay. So if I'm talking about Hawaiian eruptions, so Hawaiian eruptions, they are often referred to as hotspot based volcanism.
So hotspot based volcanism in the sense that they have deep mantle plumes coming in. तो जो डीप मेंटल प्लूम्स है यहां से आपका अल्ट्रामेफिक basaltic magma आएगा. So we'll be having ultramafic basaltic magma coming out, and therefore it will flow like a river. And these type of eruptions, they are often the quietest eruptions. They are often what? They are often the quietest eruptions. So Hawaiian type. Now, after that, you have something called as strombolian type. So, what do you mean by strombolian type? So, strombolian type meaning that you can see in this photo. So, Mount Stromboli is in Mediterranean. Mediterranean meaning that it's little bit close to Italy. So, if you ask me where do we have the Mount Stromboli? So, let me just mark it up in the atlas. Where do you actually have Mount Stromboli? So this is where you have Hawaii. So Hawaii is a hotspot based volcanism over here. Over here you have Mount Stromboli. So Stromboli, it is referred to as the lighthouse of the Mediterranean. It is referred to as what? It is referred to as the lighthouse of the Mediterranean. Then over here you have Mount Pele. So this is called as Mount Pele. And over here you have Mount Vesuvius. Okay, so if you closely observe Stromboli, so here you are not seeing that much of magma. Why you are not seeing that much of magma? Because here you have more steam and gas coming out. So यहाँ पे steam and gas ज़्यादा बाहर निकलती है as compared to magma. Therefore, such eruptions, they are also referred to as phreatic eruption. So please remember that Strombolian type eruptions, they are also referred to as phreatic eruptions. Why they are referred to as phreatic eruptions? Because here you have more steam and gas. So gas is predominantly sulfur. So यहाँ से sulfur and steam of water will be more, and the magma will be less. Magma will be less, and such eruptions, they can reach great heights. They can reach great heights. So if you ask me, sir, which is the deadliest eruption ever recorded in the sense that which eruption basically went the highest in the Earth's atmosphere ever in the history of mankind. So in the year 2022, you had the deadliest eruption up till now. It was called as the Tonga eruption. So if you carefully observe the Tonga eruption, it's called as the Hunga Tonga eruption. So this eruption was so massive in the year 2022 and early 2023 that the gas, the steam which basically got generated from here, it reached up to stratosphere. So the height till which this was seen, the height till which this steam and this gas reached was 53 kilometers. So please remember this as a very, very important current affairs for 2025. So 2025, please remember that you had the deadliest eruption up till now. It was called as the Hunga Tonga eruption, because this eruption, it splitted gas and steam up to 53 kilometers in height, and this resulted in O3 depletion also. So the ozone hole over Antarctica, it reopened because of this. So where is Hunga Tonga eruption? So it happened in the Kermadec and Tonga Trench. So it happened over here. So please remember this as a very, very important current affair for 2025. This is where you have the Tonga eruption. Will all of you remember this? आप सबको ये ध्यान में रहेगा. टोंगा इरप्शन, ये कैसा इरप्शन टाइप है? ये फेरेटिक इरप्शन टाइप है. यहां पर स्टीम एंड गैस ज्यादा बाहर निकलेगी एज कंपेयर टू मैग्मा. Everybody is appreciating this. Please give me feedback. Can I move ahead? So this is your Strombolian type, Hawaiian type and Strombolian type. Now, when we move to the another type,
This is called as Volcanian type. So Volcanian type, it is named after Mount Vesuvius. It is named after Mount Vesuvius. तो वेसुवियस माउंटेन कहां पर है? तो वेसुवियस माउंटेन है आपका नेपल्स में. तो दिस सिटी विच यू आर सीइंग, दिस इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ नेपल्स, द बर्थ प्लेस ऑफ पिज्जा. पिज्जा खाते हो ना, तो नेपोलियन पिज्जा, द बर्थ प्लेस ऑफ पिज्जा, द बर्थ प्लेस ऑफ माफिया ऑल्सो, है ना. तो पहला का माफिया टोमेटोस, तुलसी के लीव्स में ट्रेडिंग करता था. आज का माफिया यहीं से एक्सपोर्ट हो गया रशिया में, जस्ट स्टार्टेड डीलिंग इन ड्रग्स. So this is the birthplace of pizza. This is the birthplace of mafia. And ये जो आप माउंटेन देख रहे हो, this is called as Mount Vesuvius. इसके फुटहिल्स में एक सिटी थी called as Pompeii. तो अगर आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी जिंदगी में, तो Pompeii एक्सप्लोजन जो था वो इसी वजह से आया था. अभी अगर मैं माउंट वेसुवियस की बात कर रहा हूं, सो माउंट वेसुवियस में जो मैग्मा आता है, इट इज वेरी थिक, इट इज वेरी पेस्टी, विस्कस मैग्मा. बहुत ही स्टिक, बहुत ही विस्कस पेस्टी मैग्मा आता है. एंड यू हैव बेसिकली प्योरली एंडेसेटिक मैग्मा कमिंग आउट, बट दिस इज ऑफन एसोसिएटेड विथ व्हाट? दिस इज ऑफन एसोसिएटेड विथ लावा बॉम्ब. These are often associated with what? These are often associated with lava bombs. So sir, how do lava bombs look like? तो लावा बॉम्ब जो है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं. तो दीज आर लम्स ऑफ स्टिकी पेस्टी मैग्मा जो वोल्केनोस से बाहर फेंके जाते हैं. तो अगर आपने 2012 मूवी देखी होगी, तो उस मूवी के एक सीन में आपको ये दिखेगा. तो उस वोल्केनोस से कंटिन्यूअसली लावा बॉम्ब्स बाहर फेंके जा रहे हैं. So these are associated with lava bombs. So they become very, 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 very violent eruptions. They do become very violent eruptions. Please remember. Now, when I'm talking about basically the Pelian type, so they are named after Mount Pelée. So Mount Pelée is where? So Mount Pelée is in the Caribbean island. So it is in the Saint Martinique island group. So Mount Pelée is where you also have granitic magma coming out. अगर granitic magma बाहर आ गया तो इसका मतलब मौत आप सबके आगे खड़ी है. Because granitic magma is the most stickiest, it's the most pasty magma. So if I'm talking about Pelian type, so this is your Mount Pelée. This is your Saint Martinique Island in Caribbean. So if I'm talking about Mount Pelée, so Mount Pelée is the deadliest type of eruption which we can have, and this is often associated with the most stickiest and the most pasty magma called as granitic magma. So Pelian type of eruptions you will typically find in South America. You will typically found in Southeast Asia. तो अभी तक का जो deadliest eruption हमने देखा है, it happened in the 1830s. So it was called as Krakatau eruption. Krakatau eruption, which happened in the early 1830s. So it happened in Indonesia. अभी उसके जगह पे उसका बेटा आ चुका है. It is called as Anak Krakatau. It is called as Anak Krakatau. So please remember that Pelian type of eruptions, they are the most deadliest one, because यहाँ पर granitic incursions आ जाता है, granitic magma आ जाता है. Sir, Pelian type and Icelandic type, no, Iceland, Kiran ma'am, Iceland is more location, वहां पे तो basaltic eruption. Iceland sits on the more location of Atlantic, तो वहां पर तो आपका पूरा का पूरा divergent boundary, so it's very quite eruptions. So Iceland registered 2000 earthquakes in one single day, but काफी छोटे छोटे रहते हैं. तो सबसे डेडलिएस्ट आप कह रहेंगे पीलियन टाइप, बिकॉज यहां पर ग्रेनेटिक इंकर्जन्स आने लगेंगे. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन. बट सर, कैन वी क्लासिफाई वोल्केनो ऑन सम डिफरेंट लेवल ऑल्सो? यस, वी कैन क्लासिफाई वोल्केनो ऑन सम डिफरेंट लेवल ऑल्सो. So we can have classification of volcano number 3rd or number 4th. So this is D or 4th. We can have classification of the volcano on the basis of the type of central vent. On the basis of what? On the basis of type of central vent.
So type of central vent meaning that we can either have cylindrical vent or we can have something called as fissure type of vent. So we can have cylindrical vent or we can have fissure type of vent. So cylindrical vent meaning that you are having a cylindrical conduit of passage through which the magma is coming out, or fissure means you have series of small openings in the ground. You can have series of small openings in the ground, the fissure type of eruptions through which the magma is sourced from. So now if I am considering with all of you the cylindrical type, so in cylindrical type also we have two types. So if the central vent magma is of cylindrical type, but if the magma associated is andesitic magma or if it is rhyolitic magma, बताइए क्या बनाएंगे? So let's see how many of you actually know this. बताओ. तो अगर cylindrical type vent है and अगर आपका magma इसमें से बाहर आ रहा है जो andesitic है and rhyolitic है, तो इससे कौन सा वोल्केनिक फीचर बनेगा? टेल मी. द वर्ड स्टार्ट्स विथ एस. ट्राई टू गिव मी एन आंसर. ट्राई टू गिव मी एन आंसर. टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वोल्केनो यूनिक टू अर्थ कॉल्ड एज? स्ट्रोम्बोलियन टाइप. रजत जी हमने ऑलरेडी कर लिया है स्ट्रोम्बोलियन टाइप. उन वोल्केनोस को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीप स्लोप. बताओ. उन वोल्केनोस को हम लोग क्या कहते हैं जहां से स्ट्रोम्बोलियन? नो 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 नो. शील्ड नो. बताओ. The word starts with S. What is Ojas del Sarados? What is that volcano called as? Steep slope volcanoes. What are those called as? Stromboli. Ah, Sanidhya. So Sanidhya ma'am has got it. Sanidhya Daya. So thank you for the answer. So if you are having andesitic or rhyolitic eruptions, so they will create what? They will create stratovolcanoes. याद आया सबको? You will be having creation of what? You will be having stratovolcanoes. You will be having creation of what? You will be having creation of basically stratovoconical peaks. You will be having conical peaks getting erupted. याद आया सबको? It's not stromboli, it's stratovolcanoes. Stromboli is ferritic eruption. These are your stratovolcanoes. तो stromboli ferritic में जाता है. Ferritic में in the sense कि it's a very unstable structure. Stratovolcanoes, you will be having what? You will be having layers of magma. You will be having layers of magma associated with it. So stromboli will be a subset of stratovolcano. Different layers of magma accumulating on it. That is why they are called as stratovolcanoes. And please remember that stratovolcanoes, they are unique to what? They are unique to continents. आपको ओशंस में stratovolcanoes नहीं मिलेंगे. And sir, अगर cylindrical type है, and sir, if we are having basaltic eruption, if we have basaltic eruptions, so basaltic eruptions अगर आ गए, yes, composite volcano is same as stratovolcano. So this is also referred to as composite cones. They're also referred to as composite cones, or they're also referred to as cinder ash cones. So all the names are same. अगर basaltic आ गए तो फिर बताइए क्या होगा? Now tell me. If we are basaltic eruptions, yes, very good. So basaltic है तो फिर आपके क्या बनेंगे? You will be having the formation of shield domes. You will be having creation of shield domes. Example, you have Mauna Kea and Mauna Loa. So the tallest peaks on earth, Mauna Kea and Mauna Loa. You will be having Mauna Kea and Mauna Loa. तो अगर layer by layer accumulation है, will be having creation of stratovolcanoes.
unique to continents. You won't find them in the oceans because oceans में सारे volcanic eruptions will be necessarily basaltic. So you will be having layers of magma accumulating. So you'll be having conical peaks being formed. They are also referred to as cinder ash, or they are also referred to as composite cones. And if you are having basaltic eruptions, you will be having creation of what? You will be having creation of shield domes, Mauna Kea and Mauna Loa, जो मैंने आपको कल फोटो दिखाई. अभी बताइए, अगर फिशर टाइप ऑफ इरप्शंस है तो फिशर टाइप ऑफ इरप्शंस क्या बनाए? टेल मी. If you are having fissure types, so here they will be associated with ultramafic magma only. You can't have andesitic magma. So you'll be having ultramafic basaltic eruptions. So now you all tell me कि अगर fissure type of है तो fissure type क्या बनाएंगे? What will fissure type actually form? Tell me. Ridge, more locations. Okay. और बताओ. Try to guess. अरे गलत हुआ तो हाँ. Good, Kiran ma'am. So ultramafic fissure type of eruptions, you are having small eruptions, so they will be forming what? They will be forming extensive lava plateaus. They will be forming what? They will be forming extensive lava plateaus. जैसे आपका डेक्कन लावा प्लेटू है. क्यों भूल रहे हो आप? तो सर क्या आप हमें इनके थोड़े से लोकेशंस करा सकते हो? चलिए लोकेशंस कर लेते हैं फटाफट ताकि आप सबके पास लोकेशंस बने रहे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़े से एग्जांपल्स दे देता हूं आप सबको स्ट्रैटोवो वोल्केनो के. सो स्ट्रैटोवो वोल्केनोस, लेट मी गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स. So the tallest peak of North America, it is called as Denali Peak. It is also referred to as Mount McKinley. So Denali Peak / Mount McKinley, the tallest peak of North America. Then over here you have another peak called as Mount Logan. Then USA and Canada के border पे you have Mount Rainier. Then you have two more important peaks over here. So you have Mount Shasta, Sierra Nevada, and you have Mount Whitney. So Mount Shasta, you have Mount Whitney over here. मैक्सिको में यहां पर दो पीक्स है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है एंड दे आर इरप्टिंग एज वी आर स्पीकिंग. तो आर यू ऑल गाइस कॉन्सेंट्रेटिंग? मैक्सिको में दो पीक्स है जो अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं एंड साइड बाय साइड दे आर इरप्टिंग. सो दे आर इन द न्यूज. प्लीज रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. यू हैव टू पीक्स इन मैक्सिको. यू हैव पापा काटे पेटल. You have Popocatépetl, and you have another peak called as Pico de Orizaba. You have two peaks, Popocatépetl and you have Pico de Orizaba. ये दोनों peaks अभी erupt हो रहे हैं as we are speaking. So please remember this. So Pico de Orizaba and Popocatépetl. Then in South America we have already marked up two peaks. So you have Cotopaxi and you have Chimborazo. Sir, the tallest peak of the world, volcanic peak. So you have Ojos del Salados. एंड सर यहाँ पर लेक टिटिका का है, यहाँ पर बोलिवियन हाईलैंड्स है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पीक है कॉल्ड एज माउंट इलाम्पू. तो माउंट इलाम्पू इज बिसाइड्स लेक टिटिकाका. टिटिकाका इज द हाईएस्ट fresh water lake in the world. Yes, you will be getting, है ना. Then in Africa you have three peaks. तो एक है आपके पास माउंट मार्गारेथा. तो रूवेंजोरी भी कहते हैं इसे. एंड यहां पर आपके पास दो पीक्स है. यू हैव माउंट केनिया and you have the tallest peak of Africa. It is called as Kilimanjaro. You have Kilimanjaro. Okay. यहाँ पर हमने स्ट्रोम्बोली वसुवियस ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं यहाँ पे एक तीसरा पीक ऐड कर रहा हूं. यू हैव ली पीक. तो सिसिली में एक पीक है. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज माउंट एटना. इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं माउंट एटना.
तो इसे प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बैरन आइलैंड्स। इन रशिया एंटर कामचटका is having series of volcanic peaks, and in Tokyo over here, so we have a volcanic peak called as Mount Fuji-san, so Mount Fuji, and यहाँ पर एक इंडोनेशिया में in the island of Celebes, you have another peak which has erupted more than 100 times this year, so it is called as Peak Remel, or it is called as Peak Remu. So it has erupted more than 1,000 times, sorry, more than 100 times this year. तो ये बात ध्यान में रख। तो ये सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटोवो वोल्केनोज है पूरे वर्ल्ड के। इसमें से ओजस डल सैलिनोस जो है ये टॉलेस्ट पीक है, वोल्केनिक पीक पूरे दुनिया का टॉलेस्ट वोल्केनिक पीक है। ओके, नाउ इफ आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड वेयर डू वी हैव द एक्सटेंसिव लावा प्लेटूज, तो लावा प्लेटूज हमारे कहां कहां पर बने हुए हैं। तो एक लावा प्लेटू बना है आपका यहां पर, तो दिस इज वेयर यू हैव द येलोस्टोन हॉटस्पॉट। तो 2012 मूवी अगर आपने देखी होगी तो दिस इज कॉल्ड एज योसेमिटी और येलोस्टोन हॉटस्पॉट। तो यू हैव द क्रिएशन ऑफ द कोलंबिया स्नेक रिवर प्लेटू, है ना, सोनी पिक्चर्स आता है ना, तो कोलंबिया स्नेक रिवर प्लेटू, तो सोनी पिक्चर्स यहीं से आता है, राइट। देन सर ओवर हियर यू हैव पैटागोनिया। तो पैटागोनिया इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव लावा प्लेटू। सर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, हियर यू हैव किम्बरली प्लेटू। एंड सर एंटायर डेक्कन लावा प्लेटू ऑफ इंडिया। तो डेक्कन ट्रैप और डेक्कन लावा प्लेटू ये किस वजह से बना है सर? तो ये बना है जब इंडिया वॉज ट्रैवर्सिंग ओवर व्हाट? इंडिया वॉज बेसिकली ट्रैवर्सिंग ओवर मॉरिशियस reunion hotspot sir. So India was traversing over the Mauritius reunion hotspot. So hotspot again it's a localized eruptions out there, ultramafic. तो आप सबके लिए मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूँ। I have visited the place, तो मेरे पास अभी इसकी फोटो भी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आपको भी मजा आ जाएगा कि अरे डेक्कन लावा प्लेटू इससे बना हुआ है। I have just went to that place, so I am just showcasing you the photo of the Mauritius reunion hotspot. ठीक है, आर यू एबल टू सी दिस फोटो? सबको ये फोटो दिख रही है? सो दिस इज द एग्जैक्ट सेम क्रेटर, ये वो वोल्केनिक क्रेटर है। दिस इज योर मॉरिशियस यूनियन हॉटस्पॉट, जिसके बसाल्टिक इरप्शंस की वजह से आपका डेक्कन लावा प्लेटू बना हुआ है। तो व्हेन इंडियन प्लेट वाज ट्रैवर्सिंग ओवर दिस रियूनियन हॉटस्पॉट, जब इसके बाजू से ट्रैवर्स कर रही थी, तो यहीं से ये आपके पूरे के पूरे वोल्केनिक इरप्शंस वहां पर आए थे। सो दिस इज द एग्जैक्ट वोल्केनिक क्रेटर। तो दिस इज द सेंट्रल मॉरिशियन सिटी ऑफ क्यूपर, वहां पे आपको ये पूरा का पूरा मिलता है। जस्ट सी गुड फोटो ऑफ इट, पैनोरामिक फोटो लिया है मैंने। या आर यू एबल टू सी दिस? तो जस्ट बिसाइड्स दिस यू आर हैविंग द रियूनियन हॉटस्पॉट, एंड ये आपका मॉरिशियस का हॉटस्पॉट है। सो इन दोनों ने मिलके आपके पूरे डेक्कन ट्रैप्स बनाए हैं। तो अगर आप डेक्कन ट्रैप्स देखोगे, सो अभी ये जस्ट मैंने ये फोटो ली है, तो आर यू एबल टू सी दिस? सो दीज आर योर डेक्कन ट्रैप्स, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर। सो ट्रैप्स क्यों कहते हैं? बिकॉज यू आर हैविंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ बसाल्टिक इरप्शन, दे आर वेरी रिच इन क्ले। तो एक बार पानी इसके अंदर चले गया, then you can't have recharge. That is why Marathwada, Vidarbha of Maharashtra, it faces intense droughts because they are very difficult to recharge. So these are being formed roughly 60 to 70 million years ago. तो आज से 6 से 7 करोड़ साल पहले जब इंडिया मॉरिशस यूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जा रहा था, so you have creation of this Deccan traps out there. So this is basically your formation of Deccan lava plateau, and these are your extensive lava plateaus that we everybody's appreciating. So now if I'm asking you the distribution of volcanoes,
कि वोल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कि आपको कहां कहां पर वोल्केनोस मिलते हैं। So what are the regions in which we can basically have the distribution of volcanoes? तो distribution हमें कहां कहां मिल सकता है? तो distribution is very simple, sir. So we can have volcanoes along what? So sir, we can have volcanoes along the more locations. So number first, we can have the volcanoes situated along more locations. सर एक्टिव मॉर लोकेशंस कहां कहां की है? सर पैसिफिक की मॉर सिस्टम एक्टिव है, अटलांटिक की मॉर सिस्टम एक्टिव है सर। सर द मॉर सिस्टम ऑफ द इंडियन ओशन इज कंप्लीटली इनएक्टिव। तो ये जो मॉर सिस्टम है इंडियन ओशन की, लाइक दिस, द मॉर सिस्टम ऑफ द इंडियन ओशन इट्स कंप्लीटली इनएक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर फर्स्ट you can have where you can have along the divergent boundary. So you can have alongside the more location. तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूज में कौन सा है? सबसे ज्यादा न्यूज में है आइसलैंड, राइट? तो रिमेंबर कि more locations are all what? More locations are all hotspots. प्लीज रिमेंबर, सारे मोर लोकेशंस आपके कैसे हैं? ये हॉटस्पॉट्स के कैटेगरी में आते हैं, बट नॉट ऑल हॉटस्पॉट्स आर ऑन मोर लोकेशंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑल ऑफ द मोर लोकेशंस दे आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स मीनिंग कि वहां पे आपका बसाल्टिक इरप्शन चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे आइसलैंड है, ओवर हियर यू हैव अ हॉटस्पॉट कॉल्ड एज अजूर्स। देन आप नीचे में जाओगे, ओवर हियर यू हैव अ हॉटस्पॉट कॉल्ड एज असंक्शन। देन यहां पर नीचे जाओगे तो यहां पर आपको सेंट हेलेना मिलेगा। सेंट हेलेना इज वेयर नेपोलियन बोनापार्टी was kept for life imprisonment after the defeat of Battle of Waterloo. And here you have Tristan da Cunha. So the loneliest place on earth. क्रिस्तन दा कुन्हा जो है ये धरती की सबसे लोनलीस्ट प्लेस मानी जाती है। अगर मैं आपको इसकी फोटो दिखा रहा हूं तो देखिए ये है आपका सेंट हेलेना। तो सेंट हेलेना इट्स अ हॉटस्पॉट, इट्स अ more location, and this is where Napoleon Bonaparte was actually kept for life imprisonment. So this is your Saint Helena. ये किस पे है? ये आपका बेसिकली मोर पे है, अटलांटिक के। सो यू हैव बेसिकली आइसलैंड ऑल्सो, सेंट हेलेना ऑल्सो। अगर आप आइसलैंड में जाओगे तो आइसलैंड में यू कैन बेसिकली सी द अमेरिकन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट सेपरेटिंग। तो ये जो आप देख रहे हो ये आइसलैंड की आपकी मॉर सिस्टम है। लाइक लास्ट ईयर इट इरप्टेड, तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 हजार अर्थक्वेक आ गए थे। तो ये जो मॉर देख रहे हो आप, इस तरफ आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इस तरफ आपकी यूरेशियन प्लेट है। इफ यू गो टू आइसलैंड यू कैन प्रैक्टिकली सी दिस टू प्लेट सेपरेटिंग। प्लीज रिमेंबर that these are all the volcanism present on the more locations, but not all the volcanoes or not all the hotspots or on the more. So this we can estimate to be the 10% of the world. Then sir दुनिया के सबसे ज्यादा वोल्केनिक कहां पे आते हैं? तो इट इज इन दी कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो सर कन्वर्जेंट बाउंड्री कौन सी? सर कन्वर्जेंट बाउंड्री आपकी पूरी की पूरी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। So this is your PROF. So where you have active subduction, sir. So convergent boundary in the PROF, it will be having how many percentage of volcanoes? So they will account for around 85% of all the volcanoes of the world. Okay, sir. And last but not the least, the third type रहेगा आपका distribution का, it will be your isolated hotspots. So not all the hotspots are the locations of more, but every more will have numerous hotspots. So hotspots कहां पे रहेंगे? Sir hotspots आप क्यों भूल रहे हो? Sir over here you have a wine hotspot, isolated hotspots of the world. Sir this is where you have a Galapagos hotspot. So this is where Charles Darwin conducted his experiments, theory of evolution यहाँ से आई। सर यहां पर आपका मॉरिशियस रियूनियन हॉटस्पॉट है जो हमने अभी मार्क किया है। तो ये सारे आपके कैसे हैं? ये सारे आपके आइसोलेटेड हॉटस्पॉट्स हैं जो बेसिकली किसी भी प्लेट के बीच में नहीं है बट समंदरों के बीच में है।
यहाँ पर एक कर्गुलियन भी आता है, बट आपको वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आप 3 ध्यान में रख लोगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। हवाइन, देन यू आर हैविंग Mauritius Union, and then you have Galapagos hotspot. So the distribution is threefold. Number first, along the divergent boundary, along the hotspots roughly 10%. Then along the Pacific Ring of Fire, you have 85%, and around 5% you have in the isolated hotspot. So this is your distribution of volcanoes that we have. Okay, chaliye. So let us take a break of 10 minutes. After that, we'll start up with the last part of geomorphology, earthquake, rifting and faulting. ठीक है, कुछ डाउट है प्लीज पूछेगा मुझे। वॉट एवर थिंग्स यू हैव। किसी ने कुछ रिपीट करने के लिए कहा था, वो भी रिपीट कर देता हूं, देन विल स्टार्ट अप विद द अर्थक्वेक्स, रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग। ओके, सर एक बार थर्ड लिमिटेशन बता दीजिए एमटीटी का। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो जो थर्ड लिमिटेशन है एमटीटी का, थर्ड लिमिटेशन ऐसा है कि अगर आप डाइवर्जेंट बाउंड्री वर्सेस कन्वर्जेंट बाउंड्री देखते हैं, तो हमें डाइवर्जेंट बाउंड्री का एक्टिविटी धरती पे ज्यादा मिलती है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑन अर्थ इज मोर एक्टिव एज कन्वर्जेंट टू द एज कंपेयर्ड टू द कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री इज नॉट दैट एक्टिव। तो ये ज्यादा एक्टिव नहीं है इन द सेंस कि ओशन फ्लोर का जो क्रिएशन रेट है, इट इज नॉट मैचिंग द ओशन फ्लोर डिस्ट्रक्शन रेट, रादर दिस इज मोर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सरफेस एरिया है धरती का, वो हम कांस्टेंट नहीं कंसिडर कर सकते, एंड ये बढ़ा है। तो अर्थ इज बेसिकली एक्सपांडिंग इन इट्स साइज, इफ आई डेयर से दिस। सर प्लीज एक्सप्लेन एंडेसेटिक। प्रियल मैम, एंडेसेटिक तो बहुत पहले डिस्कस कर लिया बेटा, पहले ही लेक्चर में। एंडेसेटिक मैग्मा, बसाल्टिक मैग्मा। सो एंडेसाइट इज अ टाइप ऑफ igneous रॉक्स। इट इज द एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट ऑफ डायोराइट, राइट? याद आ गया प्रियल? तो वो है एंडेसाइट आपका, रुक रुक के बहेगा आपका। तो उसमें सिलिका का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो लगभग लगभग 55 to 45 के बीच में रहेगा, है ना? वो ट्रांजिशन इसमें जाएगा। सर इफ यू कैन प्लीज ब्रीफली रिपीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ OC एंड OO। ओके, आई विल डू दैट अगेन। तो सी व्हाट हैपेंस इन OO बाउंड्री। O बाउंड्री में क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्लेट, so if I'm considering Pacific plate versus Philippines plate, so but naturally your Pacific plate is going to subduct. So where the Pacific plate is actually subducting, this is you will be having the trench location. तो ट्रेंच लोकेशन पे क्या होगा, जहां पर ये प्लेट सबडक्ट होगी, तो इस सबडक्टिंग प्लेट के सेडिमेंट्स इस प्लेट के लीडिंग एज पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे। विल बी कॉलिंग दिस एज द एक्रिशनरी प्रिज्म। एंड जब ये प्लेट नीचे जाएगी, द बसाल्ट विल पार्शियली मेल्ट, इसका मेटामॉर्फोसिस होगा, एंड ये पार्शियली कन्वर्ट होके मेल्ट होके किसमें कन्वर्ट होगा? एंडेसाइट पे, विच विल क्रिएट व्हाट? इट विल क्रिएट वोल्केनिक आर्किपेलागोस। तो इसके पीछे जो कुछ समंदर का पानी रहेगा, इट विल बी कॉल्ड एज बैक आर्क, इट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल सीज। इसके आगे जो कुछ रहेगा वो आपका फोर आर्क रहेगा। तो फोर आर्क में बी हैविंग एक्रिशनरी प्रिज्म प्लस इट विल बी हैविंग द ट्रेंच लोकेशन। This is what we marked over here. So Aleutian Islands, Aleutian Trench, Bering Sea; Kuril Islands, Kuril Trench, Sea of Okhotsk; Sea of Japan, Japan Islands, Japan Trench; South China Sea, Philippines Island, Philippines Trench. And then if you are having OC boundary, OC means second in the sequence, so यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका accretionary prism होगा, this accretionary prism, इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स किस वजह से होगा? ये कॉम्प्लेक्स इस वजह से होगा बिकॉज यहां पर 3 चीजें होगी। आपका पुराना एक्रिशनरी प्रिज्म होगा जब बाउंड्री कैसी थी? ओ टाइप की। सेकंड, यू विल बी हैविंग द सबडक्टिंग ओशनिक स्लैब सेडिमेंट्स गेटिंग चब्ड, गेटिंग ब्रोकन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल बी हैविंग द पीसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लैब आल्सो गेटिंग चब्ड। तो सारे पीसेस टूट के ऊपर उठ जाएंगे एज व्हाट? एज द एंडीज। दिस विल बी कॉल्ड एज मेल। गेटिंग इट? सॉरी सर।
चलिए, और किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछिएगा। एनीबडी हैविंग एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क। रेस्ट ऑल ऑफ यू, आर यू ऑल फॉलोइंग? प्लीज टेल मी क्विकली। सब लोग कंफर्ट महसूस कर रहे हो? सब लोग को फटाफट रिवीजन हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रहा है? बिकॉज हम लोग पेस पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। आज जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करके कल हम लोग क्लाइमेटोलॉजी ऑन करेंगे। तो प्लीज आप लोगों का साथ एंड आप लोगों का विश्वास की जरूरत है, ठीक है। जो नॉर्मली 8 से 10 लेक्चर में पढ़ाया जाता है 3-3 घंटे के, ठीक है। सो 8 लेक्चर मल्टीप्लीकेट बाय 3, सो 24 आवर्स में खत्म कर रहा हूं कितने में? तो 24 आवर्स आई एम कंप्लीटिंग इट इन जस्ट 8 आवर्स। तो ध्यान में रखना कि हम बहुत पेस से जा रहे हैं, अज्यूम करके कि आप सबके बेसिक स्ट्रांग है। सर हाउ डिड ओओ लीड टू ओसी? सॉरी, सो बट नेचुरली फर्स्ट whenever the OO boundary will completely get subducted, इसके बाद पीछे क्या बाकी रहेगा? कॉन्टिनेंटल स्लैब ही बाकी रहेगा ना। तो OO is not leading to OC, it's the sequence. Because one time will come when the O floor will completely subduct. So what will remain is the C boundary. Okay. Sir, one self revision after the lecture will do the work. Yes, Jasmine ma'am, it will do the work. Sir, because of spreading out of newer formations? Yes, of course, Shaurya. You have answered your own question. So it's basically the force of the new eruptions. So you are having continuous eruptions. It is basically leading into spreading out. Okay. Guys, are all of you over here with me? सब लोग हो मेरे साथ में? एनर्जी कैसी है? How is the जोश? वैसे पूछना तो गलत है ये, how is the जोश? बट थोड़ा सा मेरे से बातचीत करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। कैसी चल रही है जिंदगी? How is the life going? Hi, good. From which cities you are connecting with me? Just give me a feedback. कौन से सिटी से मेरे साथ बातचीत कर रहे हो अभी बताओ? Let me just know the cities from which you are conversing with me. Write the names of the cities. Delhi. Oh my God. Sorry, Richa ma'am. So Delhi right now is living hell. BTech and CSC with okay. रजत जी गोरखपुर से हो। किरण मैम यू आर फ्रॉम बिजनौर, क्या बात है। रांची, चलिए घर के पास है। क्रिस्टल क्लियर इन फैक्ट, गुड गुड शौर्या। हिमांशु यू आर फ्रॉम जयपुर। जालंधर इन पंजाब। जसमीन मैडम आप काफी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। गाजियाबाद, अरे बाप रे। राजदीप सर यू आर फ्रॉम कोलकाता। ओके, कोलकाता में कहां से हो? हावड़ा, जयपुर, लाहौर। सीरियसली श्रुति मैम यू आर फ्रॉम लाहौर? माय गॉड, आई गॉट स्कैर्ड। ओके, इट्स दिल्ली। देन यू हैव रायपुर। अच्छा रायपुर, जयललिता मैम, सो आप मेरे घर से काफी पास हो। टेकिंग दिस लेक्चर फ्रॉम नागपुर। अच्छा उद्धव यू आर फ्रॉम नवी मुंबई, गुड। इलेक्शन है कल। गोरखपुर, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। साइकित आचार्य जी, सो फ्रॉम आचार्य जी, फ्रॉम वेयर आर यू? फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके, राजदीप यू आर फ्रॉम हावड़ा, गुड गुड गुड। मिदनापुर, ओके, समानता। I wrote Lahore for a mistake. Good, good. Shruti ma'am, please don't do this in the UPSC. Okay. Tamo, from which city in Arunachal? From which town? Okay, you are from Ashoknagar. Good, good, good. Very famous for its sweet delicacies, Ashoknagar. झांसी, चलिए, ओके। इल्मा मैम तो आप मेरे घर के पास हो, झांसी से। रुदिका, यू आर फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। Seriously, how are all of you surviving right now, है ना? Sir, how's the weather in Nagpur? Never been. Siddharth, Nagpur, it's got a very pleasant weather. Now it's really very cold. Actually, Nagpur has got like numerous wildlife sanctuaries and national parks around it. So Nagpur is the tiger capital of the world. So I'm having Pench, Tadoba, Nagzira, Meghat, all the forests surrounding my area. So it's a good weather. Sir, AQ and Delhi. Arey, AQ and Delhi is not 495, ma'am. Jasmine ma'am, it has crossed 1000. It's the average 495. It has crossed 1000, ma'am. Lakshmi Devi, you are from Karnataka. Karnataka from which city? Which town, ma'am? State? No, I just want to know the town so that I can be more frank with you all. See, I do this exercise because I know that everyone has got different sets of circumstances, different levels of coaching, different levels of understanding. तो मुझे आप सबको साथ लेके चलना है. Okay, you are from Gulbarga. Nice, nice. Very picturesque town.
Shaurya, really, you are from Mosindran. I'm envying you. Why are you preparing for UPSC? You should be happy in Mosindran, yaar. Enjoy the rains. Where are you coming in this field? आजमगढ़, क्या बात है अभिषेक जी, आजमगढ़ से हो, क्या बात। हाँ तो कट्टा चलता है। रियल, यू आर फ्रॉम रायपुर। पास में वो मेरे घर से। बहुत अलग अलग जगहों से जुड़ गए हो सब लोग, अच्छा लगता है। तो आर यू फीलिंग एज दो यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लास, और यू फीलिंग एज दो यू आर टेकिंग ऑफलाइन क्लास? कैसा लग रहा है आप लोगों को ऑनलाइन ज्योग्राफी ऐसा पढ़ के, है ना? अभिषेक जी हंस दिए, है ना? अभिषेक जी आपके पास तो नहीं है। हैप्पी सर, ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन, ऑल बिकॉज ऑफ, वी कैन से बाबा अंबानी साहब की देन है, जियो दन दनादन। आई जस्ट रोट इट बिकॉज आई वेंट देयर अ व्हाइल अगो। ओके, ऑफलाइन ट्राई ही नहीं किया। चलिए, अच्छी बात है, ऑनलाइन बेस्ट। आई कांट से दैट either online or offline is best. It's the best of the both worlds, I can say. You know, it's the best of the both worlds, I can say that. But अच्छा, like, use in online, the influence or the connection scope is pan India. So many students join from every places. बस मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि आप सब लोग मेरे कांटेक्ट में रहना, ठीक है? आई विल गिव यू माय टेलीग्राम हैंडल ऑल्सो। ध्यान में रखना कि मेरे साथ कांटेक्ट में रहना, डोंट लूज आउट ऑन मी, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु विल टीच एज पर द एनर्जी ऑफ माई एस्पिरेंट। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं कि ऑनलाइन आया, पीपीटी खोल दी एंड पढ़ा के चले गया, है ना? नहीं तो ऑनलाइन में क्या होता है ना कि पीपीटी खोलते हैं, रटा रटा पढ़ा के चले जाते हैं। आई एम नॉट एडवोकेट ऑफ दैट। So I will teach everything by hand, by an organic way, and I will mark up all the locations on the maps. I will use the screen to show you images जितना हो सके उतना, and that is how we generate basically interest in geography. चलिए, so guys, can I just have 2 minutes of break? Then we'll start off with earthquakes. We'll wind up with rifting and faulting. मैं 2 मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ? So we also bought that Atlas, so you could told us. Yes, yes, Jasmine ma'am, वो मुझे next नहीं, उसके बाद में लगेगा जब हम लोग मैपिंग करेंगे. A channel in which you share locations based current. Yes, sure, I will do that. Don't worry, बेटा. I will do that. ठीक है, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ. I will start off with earthquakes and volcanism. ठीक है, so I'm keeping the video on. The chats are also on. The audio is muted. चलो, everyone is here. Can I move ahead? Can I bulge ahead? Please give me a feedback. आगे बढ़े? Guys, everyone is here. Can I move it? Yes, Siddharth, I will let you know if I visit Delhi. Right now, it's not on the cards, but hopefully after your batch completion, I might visit. Okay. So I'm now beginning up with the next aspect, and earthquakes, rifting and faulting, the last part, and the remaining geomagnetism, we will deal it as a part of current affairs. Don't need to worry. If I'm discussing with you all the earthquakes, so earthquakes basically meaning what? Earthquakes basically meaning the rigorous shaking of ground. So if I'm talking about the rigorous shaking of ground, so this rigorous shaking of ground happens because of what? So this rigorous shaking of ground, it can happen because of two things. So the earthquakes can be natural earthquakes, or the earthquakes can be man-made earthquakes. You can have natural earthquakes or you can have man-made earthquakes. So man-made earthquakes will be associated with what? They will be associated with drilling. So large-scale drilling you have. Then you can have earthquakes associated with mining.
So large scale, you can have mining going on. Then you can have due to nuclear tests. So nuclear launch sites or nuclear tests, or you can have something due to faulty construction of dams. So faulty dams. So this is called as reservoir induced seismicity. Reservoir induced seismicity. So reservoir induced seismicity meaning what? So ideally your dam should have a construction like this. So the base of the dam should be wide. Why the base should be wide? Because it has to stop the water. So water will apply what? Water will apply pressure. So it has to basically stop the hydrostatic pressure. The water is inundated backwards. It needs to stop the water back. So this is referred to as hydrostatic pressure. So if the dam construction is faulty and if the base is not wide enough, what can happen? The entire dam can collapse. So you have a very good example of this. You have the Maharashtra's biggest reservoir. It is called as Shivaji Sagar Reservoir. It is called as Koyna Dam. So you had a major earthquake in Koyna Dam because of this. So you can remember a case study, faulty dam construction. So it happened in Maharashtra. So in Maharashtra, we have the Shivaji Sagar Reservoir. We have the Shivaji Sagar Reservoir. It was present in the Konya Dam. So on River Krishna, one of the biggest disasters. Naturally, no, man-made. Because of what? We had large scale earthquake coming in. But if I'm talking about natural earthquakes, so natural earthquakes, they are predominantly due to what? Natural earthquakes, they are predominantly due to mantle dynamics. So you have natural mantle dynamics, because of which you have the earthquakes. They are often associated with what? They are often associated with plate tectonics. So if we are bound to study the earthquakes, which earthquake should we study? So it is basically the natural earthquakes which we all should be focusing on predominantly. So now I'm beginning up with you all the discussion of natural earthquakes, but before that, remember I told you that I'll be discussing the R wave and the L wave with you all when I'm discussing the earthquakes. If I'm talking about the shaking of ground, if I'm talking about the earthquake's Richter scale magnitude, so the shaking of ground is happening because of two waves. So we have the love wave, it is also called as the L wave, and the another one, it is called as the R wave. It is also referred to as the Rayleigh wave. Please remember, both of them, they are transverse waves. So transverse wave meaning that the vibration of the particles of the medium will be perpendicular to the axis of the energy flow. So if I'm talking about the L wave, so in L wave, how do the particles of the medium vibrate? So let's say that this is your propagation of wave. So particles of the medium, they vibrate like this. The particles of the medium, they start vibrating like this. So if your wave is propagating like this, the particles of the medium, they start basically shaking horizontally perpendicularly. So in L wave, you have what? You have horizontal shaking perpendicular to the energy wave. So this is your energy. So this is happening perpendicularly to the energy flow. So the buildings, they start to wobble. So in L wave propagation, we basically have what? We basically have wobbling of buildings. And when I'm talking about R wave, so whenever you are having the passage of R wave, if this is the R wave which is going through, so you have basically the curling of the medium. So curling of the medium in the sense that
your ground, it basically uplifts and it curls like this. So in the propagation of R wave, you have curling of ground. So due to curling of ground, what happens is that you have upliftment of the ground. So you must have seen whenever earthquake comes, the ground uplifts somewhere. So why uplifts? Because the ground gets curled up. When the passage of R wave happens, it starts curling up the ground. So you have localized upliftment. You have basically localized upliftment. You have basically localized upliftment. So now, if I'm talking about the types of earthquakes that we have, so we have understood the shaking of the ground, we have understood the uh, types on the basis of natural and man-made, but on the basis of its depth of foci, we have three types of earthquakes. So we have three types of earthquakes on the basis of type of foci. So what different types do we have? So the first type of earthquake that we have, they are called as shallow focus earthquake. So shallow focus earthquakes meaning that the foci or the origin of the stress is shallow. The origin of the stress being shallow meaning that in shallow focus, the origin of the earthquake or the energy dissipation is within how much? It is between 30 to 50 kilometers from the surface. So it's 30 to 50 kilometers from the surface. So they are called as shallow focus. Then number two, you have intermediary focus earthquakes. You have intermediary focus earthquakes. So in intermediary focus earthquakes, the focus is let's say roughly between I can guess that between 50 to 300 kilometers. So the focus is between 300 kilometers from the surface. And then lastly, number third, you have deep focus earthquake. You have something called as deep focus earthquake. So deep focus earthquake meaning that the foci is roughly 500 to 700 kilometers from the surface. It is roughly between 500 to 700 kilometers from the surface. So now, please tell me, where can we find all three types of earthquake? Tell me. So, in which boundary type we can find which type of earthquake? Can we find shallow focus earthquakes in OO boundary? Can we find shallow focus earthquakes in OC boundary? Can we find shallow focus earthquakes in CC boundary? Yes. So please understand this, that shallow focus earthquakes you can find in all types of boundaries. So you can have shallow focus earthquakes in divergent boundary, you can have shallow focus earthquakes in convergent boundary, and you can have shallow focus earthquakes in transform boundary. So every type of boundary can be associated with what? So every type of boundary can be associated with shallow focus earthquake. Please remember. So we can have shallow focus earthquakes at the more locations. We can have shallow focus earthquake at the trench locations. We can have shallow focus earthquake at or in the fold mountainous regions. And we can have the transform boundary earthquakes where at the transform faults. At the transform faults. But when I talk about intermediary focus and deep focus, when I talk about intermediary focus and deep focus, where can we find these earthquakes? So, you can find these earthquakes only in one particular zone. What is that one particular zone called as? Guys, are all of you focusing on me? सब लोग हो न्यूज में, because ये
कल का करंट अफेयर्स है जो डिस्कवर किया गया है. सो दिस इज बेसिकली अ करंट अफेयर्स विच हैज बीन डिस्कवर्ड yesterday only. So this is now a very very important current affair which has been discovered in the Pacific. So this is a news which I am basically uh, showcasing of yesterday. So my Telegram handle is CSC with PM. Are you able to see this? So this is my yes, Benioff Vadati zone. So my Telegram handle is CSC with PM. You can all connect with me. Have you taken the note of this? So this is my Telegram handle CSC with PM. And on this, I have shared this news yesterday. So this is the news which I have shared yesterday. Dinosaur era seafloor discovery could rewrite Earth's history. So over here in the East Pacific Ridge where we have the subduction of Nazca plate, there we have discovered this zone. तो पहले से zone पता था हमें, but now this has been discovered yesterday. So see, this is of November 16, 2024. Are you all able to see this? So you please subscribe to my channel. It's CSC with PM. Don't worry, I don't bother you that much. जितना import होता है उतना ही भेजता हूँ. But all of you do subscribe to this. So it's CSC with PM. Okay. CSC with PM, please subscribe to this channel. So if I'm talking about basically the discovery, so this is found where? So this is found in the Benioff Vadati zone. So this zone has also been discovered in the East Pacific. So East Pacific rise or ridge. So this is basically the Moore system of the Pacific. So sir, what is this Benioff Vadati zone? So this is very special. Please understand this. Benioff Vadati zone. So Benioff Vadati zone is that zone. So let's say you have one plate like this, and beneath this you have subduction of another plate. So this is your another plate which is subducting. So this is typically associated with subduction margins. This is typically associated with what? This is typically associated with the subduction margins out there. So subduction margins meaning where you have an active subduction point. So in the subduction point, what happens is you have one particular zone where this subducting continental slab or oceanic slab, sorry, my bad, please, I'm correcting myself. Continental slab can never subduct, only the oceanic slab subducts. कभी कभी गलती हो जाती है, understand this, because I'm standing literally since 11 o'clock in the morning, तो मुंह से कभी कभी गलत हो जाता है. Please understand that whenever you will be having subduction boundary, so what happens that there is one zone where this slab basically breaks. So let me just draw it very carefully. मैं फिर से इसे redraw कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ा इसे मिटा के. So you will be having a fracture zone of the slab. Fracture zone in the sense that your slab basically fractures and it descends into the mantle and melts. So you will be having one particular region where the subducting oceanic slab, it basically does what? It basically breaks and it starts descending into the mantle. So it breaks and it descends into the mantle, or some part of it can rise up. तो थोड़ा सा पार्ट ऊपर उठ सकता है. It can create the volcanic archipelagos. So this zone where it breaks, where some part of it descends into the mantle, so this zone is referred to as Benioff Vadati zone. And this is the zone where you find very unstable forms of olivine. You remember garnet? You remember garnet? Do you remember spinel? Do you remember perovskite? याद आ रहा है सबको? So see, now you will appreciate why did I teach you this. So all of these are very unstable forms of what? These are very unstable forms of olivine. So this is the region where you find in huge quantities all of these minerals. So they become very, very reactive. They are very, very unstable.
So that is why you will be having deep and intermediary focus associated with the Benioff Vadati zone. And please remember, this is a very, very important current affair for 2025. Guys, will all of you remember this? It's very, very important. Please बताइए आप सबको समझ में आया? मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज बस कल की न्यूज है ये, 2 दिन पहले की न्यूज है ये, जो मैंने शेयर भी की है ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. आई एम अगेन रिइटरेटिंग, हैव यू ऑल जॉइंड दिस? तो सर्च करना एंड ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है? एंड डू शेयर विद योर पीपल ऑल्सो, जो भी है, ताकि आप सब लोग अपडेटेड रहे. टेंशन मत लेना, मैं उसमें कोई ऐसा प्रमोशनल ज्यादा कुछ करता नहीं हूं एंड आई डोंट बेसिकली ट्रबल यू, ठीक है? मैं ऐसा नहीं हूं कि भर भर के कंटेंट डालूंगा. I guess now all of you know my teaching methodology, my way of articulating things. Yes, the breaking off is causing earthquakes. So you are having slab mantle friction sure. So what you have over here is basically slab mantle friction. You have is basically slab mantle friction. Comfortable everybody? Please give me feedback. Shall I move ahead? So I'm giving you 2 minutes. Please revise it and ask me any difficulty. ये स्लाइड रिवाइज करो, 2 मिनट दे रहा हूं फट से. देन वी स्टार्ट ऑफ विद द लास्ट पॉइंट, रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग, द क्रिएशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स. Everybody please comment me F. Can I move ahead? Everybody please comment me F. Can I move ahead? Once you are done with this, please comment me F. Can I move ahead? Everybody? Sir, I have a question. Vadati Benioff zone, when first break is shallow focus? No, Jasmine ma'am. So Benioff Vadati zone is where you have the mantle core boundary, sorry, mantle crust boundary, madam. So this is your mantle crust boundary. This is your mantle crust boundary, or you can have it transitioning zone. So this is your middle mantle. So this can be also considered as your middle mantle. Please don't associate it with which is happening on the surface. So this is your middle mantle. That is why I told you that that is a very important current affairs. Okay, जसमीन मैडम समझ में आ गया? ये ट्रांजिशन जोन है मिडिल मेंटल का, लगभग 550 to 650 किलोमीटर्स डाउन. दैट इज व्हाई दिस इज एसोसिएटेड विद डीप फोकस अर्थक्वेक्स, 500 to 700 किलोमीटर. ठीक है, चलिए. So now I'm starting off with the last part, rifting and faulting. So ध्यान में रखिएगा, एक थे हमारे volcanoes, एक थे हमारे mountains. So see, if I'm talking about mountains, so I guess all of you are wise enough to understand that if I'm talking about mountains, we can have 4 to 5 different types of mountains. So we can have volcanic mountains, right? So volcanic mountains we have already done. So we can have stratovolcanoes, right? Then we can have shields. We can have cones. So these are your volcanic mountains. Then number 2, you can have fold mountains, right? So number 2, you can have fold mountains. So fold mountains meaning that they are formed where? So they are formed typically at the feature of CC boundary, and you have 3 distinct features. Number A, that fold mountains, they will always exist as what? They will always exist as series of parallel ranges. They will be never existing as one singular series. If you are having Himalayas, you have Trans Himalayas, Great Himalayas, Middle Himalayas, the Shivaliks. So it will be existing as series of parallel ranges. Then number 2, they will be always having sedimentary rocks of marine origin.
So you will always have sedimentary rocks, but the sedimentary rocks will always be of marine origin. Why? Because first the boundary was of OO type, then the boundary was of OC type. So that is why the universal rock of the cold mountains is calcium carbonate. CaCO3. Guys, can you give me 1 minute? I'm taking some medicine. Actually, my throat is spinning up a lot. मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं मेडिसिन लेके आ रहा हूँ. Sorry, my bad. Yeah, okay, I'm back. So you have sedimentary rocks of marine origin. So the universal rock of fold mountains is going to be calcium carbonate. So it's going to be limestone. So we'll find always limestone being found in the fold mountains. And last but not the least, the third feature of fold mountains is going to be what? So are fold mountains formed randomly? No. Fold mountains, they will always exist. Shields, written as shields. So fold mountains will always be found where? So fold mountains, they will always be found at the steeture of two plates. If this is one plate, this is another plate. ये जो मेरे buttons देख रहे हो आप, these are your fold mountains. So they are never randomly found. They are always found where? So they are always found at the plate margins. So they will be always found where? They will be always found at the plate margins, never randomly found. So these are your fold mountains. Then number three, you can have something called as escarpments. So escarpments meaning that you can have them as the edges of plateau. You can have them as the edges of plateau, right? So example, in India we have Western Ghats. So Western Ghats, they are basically the edges of Deccan lava plateau. Just an example of escarpment. So when I will do India, we'll do Maikal range, the escarpment of the Amarkantak plateau, Western Ghats, the escarpment of Deccan lava plateau. If you go to Australia, Hammersley, Darling range, I will teach you all of that, don't worry. So just an example. Then number fourth, you can have mountains which are residual slash relict mountains. So residual slash relict mountains means such mountains which were very old. So they were fold mountains in orogeny. So when they were formed, they were fold mountains, but today they are eroded. Today they are denuded completely. So if you ask me that which is one of the oldest mountain systems in India, you have Aravalis, Western Ghats, Vindhyas, Satpuras. So all of these mountains, they are more than 3 billion years old. Eastern Ghats, Aravalis, more than 3.2 billion years old. When they were formed, they were basically fold mountains in origin. Today they are eroded. So the average elevation is less than 900 meters. Why? Because today they remain as residual and relict mountains. So DLP, Deccan Lava Plateau, Abhishek sir. Western Ghats, the extensions of Deccan Lava Plateau, DLP. I wrote short form because they are basically, we have written over. No, sorry. Appalachians are not residual relic. Please don't confuse. Appalachians are fold mountains still today. Appalachians, they are barely 200 million years old. So they are just 20 crore year old mountains. Old mountains, Aravallis, Western Ghats and Vindhyas, they are 3.2. Like ये हमारे है ना, like this is our thing. जहाँ पे हम लोग हमेशा अमेरिका से कंपेयर कर बैठते हैं. Not singling it out, sorry you, but this is what we. अरे India's landmass is the oldest landmass on earth. America, it's बच्चा है इंडिया के आगे. Appalachians, all of them, they are fairly young mountains. India has got one of the oldest landmass. आप जिस जमीन पे बैठे हो, that is the oldest craton of the world. Okay, so we should take pride in India. So such mountains which were basically very high in elevation, today they are eroded. They are called as residual relic. And remember, when I'm discussing fold mountains, so fold mountains, they are unique to earth. Okay, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. So Himalayas, Andes, Rockies, they are all unique to earth and they are referred to as true orogens. इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हम इन्हें ट्रू ओरिजिन्स के नाम से संबोधित करते हैं, बिकॉज ये आपको धरती पे छोड़ के और कहीं नहीं मिलेंगे. एंड द लास्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स विच वी हैव, विच आई एम कंप्लीटिंग नाउ, नंबर 5th, they are called as block mountain.
They are called as what? They are called as block mountains. So block mountains, they are the consequence of what? They are the consequence of rifting and faulting. They are the consequence of what? They are the consequence of rifting and faulting. So now let us try to understand the types of rifts. Sir, do we have to remember every mountain how much old? No, no, Kiran ma'am. That is not your cup of tea. That is the geography optional territory. That is why I'm not explaining you how much old they are. When I will teach you Indian geography, anyways, I will mention all of this, but not every mountain. So please don't get frightened and don't go in that much depth. You don't have to remember. Okay. But Indian mountains, you will have to remember. So now, when I'm talking about rifting and faulting, so this is a very important word because rifting and faulting is defined as what? It is defined as the process of basically cracking of the earth crust. So cracking of the crust in totality. Please remember this, cracking of crust in totality. So your entire crust cracks and the resultant displacement So here you have basically two types of rifting and faulting. So it depends upon how the forces are acting. So you have two cases. First case, case A. If the forces acting are actually displaced. So this is case A. So what do you mean by this? If the forces acting are actually displaced. So let's say that you have a block like this. Okay, you have a block like this. Let me draw a good diagram so that all of you have it. And let's say one force is acting like this and another force is acting like this. It might be compressive or it might be tensile. So see, the axial lines of the forces, they are displaced. So they are actually displaced. So in such times, what happens is that whenever the crack develops, so if I'm painting for all of you a 3D picture of this, so let's say the block is like this. Okay, so one force is acting over here, one force is acting over here. So when the crack develops, the crack always develops like this? No, the crack will always develop like what? So the crack always develops like this. So this is how the cracking happens, and the crack is always vertical. So the fault which is developing, the fault is always vertical. So this is a thumb rule. Please remember this, that the fault is always going to be a vertical fault. So it will be perfectly vertical, perfectly straight. So whenever we'll be having a rifting, so rifting कैसा होगा? This block or this block will basically shift. So rifting के वक्त क्या होता है? So how the rifting happens? So let's say that you are over here. Like, let me just paint up for all of you. So let's say that this is the cracking, how it is happening. So this is your crack which is developing. So I'm comparing point A or I'm comparing point B. So when the rifting happens, so this is your point B and this is your point A. So you have two cases. Either you can have displacement of point A on the right side with respect to point B. So this is your point B and this is your point A. So point A has moved in the right side as compared to point B. Or you can have another case that your point A has moved left hand side as compared to point B. So this is your point A or this is your point B. So here the displacement is towards left, here the displacement is towards right. So you can have displacement in either of the side. You can have either in the right side, A is moving here or A is moving there. So this is referred to as the heave of displacement. So heave in the sense, ये जो आप distance देख रहे हो, जितना displacement हुआ है, this is referred to as the heave. Heave basically meaning the distance of displacement.
This is referred to as what? This is referred to as the heave of the displacement, and the fault which is developing, ये जो fault यहाँ पर develop हो रही है, so this fault is referred to as what? So this fault is referred to as wrench fault. This is referred to as transform fault. This is also referred to as shear fault, or it is also referred to as wrench fault. So different types of names of the same fault, but here you have relative displacement either on the right or on the left. So heave is basically your relative displacement. This is your relative displacement. So if you are having a right slip, so this is referred to as right slip fault, or this is referred to as dextral fault. This is referred to as right slip or dextral fault, or if it is left side slip, so it is called as left slip, or it is also referred to as sinistrial fault. It is also referred to as sinistrial, FAULT. Will every one of you remember this? So these are typically found where? So this is typically found along the more locations. So more locations you will be having which faults? The transform faults. Now is it clear to everybody the differential rates of spreading that we have? Give me your feedback, then I will start up with the last part where the forces are acting along the same line. Sir, in the diagram we have assumed that B remains in the position. Yes, so Shaurya, B is where you are standing. If you are standing and if you are having right slip, it is called as dextral fault. If you are standing over here and if you are having left slip, you are having sinistrial fault. So somewhere we'll have to assume that we are standing, right? Otherwise, how can we calculate the heave? Guys, I want a comment from everybody. Unless every one of you gives me the thumbs up, I won't move ahead. Guys, every one of you is here. Please give me a feedback. Can I move ahead? Guys, are you all able to hear and see me? Hello? Shall I stop? Shall we do this tomorrow? You want me to stop? Or can you give me 5-10 minutes more? We'll finish off. Can I just continue for 5-10 more minutes? We'll finish off geomorphology. बस 5-10 मिनट और. Continue? Chalo, thank you. Now, the next case, you have case B. When the forces acting are acting along the same line. So here you have two types of cases. If the forces are acting along the same line, so you have two case studies. Number A, or number 1, the forces are compressive forces, or number 2, you are having the forces are tensile forces. The forces are tensile force. So you can have compressive forces or you can have tensile force. Please remember, whenever this happens, so as a rule, don't forget this, as a rule, the fault is always inclined. Fault is never straight. The fault is always inclined fault. It's never a straight fault. So if I'm discussing with you all how this actually happens, so now see this carefully. I'm talking that the forces are compressive forces. They are acting along the same line. So this is one force acting, this is another force acting. How is the fault developed? So the fault is developed like this.
The fault is always inclined with respect to the vertical. It's not perfectly vertical. So either the forces are compressive or are the forces tensile. So tensile meaning that we are having forces acting like this. So in this case also, the fault which is developing, it is always inclined with respect to the vertical. So if I'm talking about the compressive forces or the tensile forces, so let's say that this is your block, this is your crack which is developed. So the area to the back of the crack or the block which is to the downside of the crack, this is referred to as footwall. The area which is above the crack, it is called as hanging wall. Same case over here. So let's say your crack is developed like this. So the area which is to the back of the crack, it is called as footwall. The block which is above the crack, it is called as hanging wall. If the forces are compressive, always remember that in compressive forces, hanging wall are always thrown up. The hanging wall are always thrown up and the footwalls are always thrown below, or they're always thrown down. So this is a very, very important rule, that whenever we are having compressive forces, the hanging walls are always thrown up and the footwalls are always thrown below. So if the rifting is happening, how will the rifting happen? So your footwall is thrown below and your hanging wall is thrown up. Your hanging wall goes up and your footwall basically goes down. So please remember that HW is your hanging wall and FW is your footwall. PW is your footwall. So such type of rifting and faulting, this is called as compressive rifting and reverse faulting and reverse fault. So such type of faults, they are called as what? They are called as reverse faults. So whenever you will be having compressive forces, you will be having which type of faults being formed? You will be having reverse faults being formed. Now exactly opposite will happen over here. In this case, which walls will be thrown up? So in this case, the footwalls will be thrown up and the hanging walls will go down. So your footwalls, they are basically elevated. So your footwalls will get elevated, your footwall is thrown up, and here your hanging wall is going down. Your hanging wall is going down. So now such type of rifting and faulting, it is referred to as what? This is referred to as tensile rifting, and please remember this is called as a normal faulting. Now why do we call this as normal faulting? So we call this as normal faulting. Why? Because this is typically found in nature. So occurrence of divergent boundary is where you will be having normal faulting happening. So just understand this case. So let's say if we are having a block like this, ये हमारे पास एक block है. Let's say you are having crack like this. So this is your foot wall, this is your hanging wall, this is your foot wall. So if rifting happens, if you are having rift, so and then ultimately you have faulting also, so you have faults and drifts forming. So यहाँ पर क्या होगा? So here your foot walls are elevated. Let's say this is your tensile force. So this is your formation of divergent boundary, right? So your foot walls are elevated and your hanging wall is going down. Your hanging wall goes down. So this is your hanging wall. This is your foot wall. So hanging walls gone up, no, hanging walls gone down, foot walls elevated, hanging wall. So over the period of time, this now makes your what? So this now makes your rift valley. So this is your rift valley,
The block which goes down, it is called as graben, and the block which goes up, it is called as horst. So this is referred to as what? This is referred to as horst. So example of this, you have the Great African Rift Valley, and you also have something called as the Narmada Rift. You have the Narmada. So let me showcase you the image of this. Are you all able to see this image? So this is your Vindhyas, Narmada and Satpura. Yes, Narmada Valley is a rift valley. Are you all able to see this? So the footwall gone down, sorry, the hanging wall gone down and the footwall is elevated. So this now becomes your rift valley. Are you all appreciating this? So the Narmada rift and the Tapi rift. Comfortable everybody? Please give me a feedback. So now, if I am basically discussing with you all the distribution of earthquakes, right? I have not yet discussed the distribution of earthquakes with all of you, right? So the last part, let us try to discuss the distribution of earthquakes, that where we can have earthquakes. So can you all tell me that where can we have the distribution of earthquakes? Just for our sake of understanding, where we can have the distribution of earthquakes? Tell me. सर भूल नहीं है ये वाला, बताइए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स कहाँ कहाँ आ सकता है? बिकॉज मैंने रिफ्टिंग फॉल्टिंग तो डिस्कवर कर लिया, तो अभी अर्थक्वेक्स का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर कैन वी हैव रियली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक. So can I say that the highest incidence of earthquake will be where? Highest incidence of earthquakes will be at the prof margins. So the Pacific Ring of Fire, this will be having 85% of the world's earthquakes. So this will where you will be having the 85% of the world's earthquakes, right? So here you have which type of earthquakes? You have shallow focus, intermediary focus and deep focus. All three types of earthquakes you have. So the convergent boundary. Then can I say that the CC collision boundary, this complete CC collision boundary where you have collision of Africa, Arabia and India. So this is called as the Alpide belt. So Alpide belt meaning here you basically have pure CC boundary. So here you have all types of boundaries. So shallow focus, intermediate focus and deep focus. But here you have OC and you are having OO. So prof region will be having subduction boundary. So subduction regions will have how much? It will be having 85%. Pure CC boundary, you will be having how many percentage? So roughly 10% of the earthquakes. Okay, sir. So CC collision will have 10%. So then why are you forgetting the more locations? So the more locations will have how much? The more locations will have roughly 5% of the earthquakes. Sir, it's over now. What's remaining? No, we still have something. So we can also have the distribution of earthquakes alongside the transform boundaries. So we can have earthquakes alongside the transform boundaries. And sir, last but not the least. So number first is your prof region. Number 2 is your alpine belt. Number 3 is your more location. Number 4 is your transform boundary. Sir, number 5, you can have what? You can have random earthquakes. So random earthquakes you can have at the hotspots. And sir, you can have random earthquakes where? So you can have them in the ancient faults. So if the craton is very old, if the continental crust is very old, you can have ancient faults. You remember Bhuj earthquake? You remember Latur earthquake? So why? Because the Djibouti triple junction is connected to the Narmada triple junction.
So ancient faults can have, which can again result into formation of earthquakes. So here you have in Turkey also. So this is your alpine belt. And now, why the CC earthquakes become so deadly? The last part for today. So if I'm talking about the alpine belt, अगर मैं alpine belt के बारे में आपसे कह रहा हूँ, तो alpine belt is your CC boundary. Okay, so it's a continuous belt from Spain till Myanmar, Thailand. So it's a continuous belt from Myanmar till Thailand, Cambodia. तो ये इतना deadly क्यों है? Because here we have a very special type of faulting. We call it as oblique fault. We call it as what? We call it as oblique fault. So in oblique fault, what happens? So in oblique fault, your foot walls get elevated, but at the same point of time, your hanging walls go down. So this is your hanging wall. So in oblique fault, what happens is that your hanging walls, they go down, your foot walls, they get elevated, but at the same point of time, you have vertical displacement also, and you have horizontal displacement also. So you have vertical displacement as well as you have horizontal displacement. So you have horizontal plus vertical displacement. And now, because of this, what happens? Because of the vertical and horizontal displacement, what happens? So if you have a soft story structure, so imagine that this is your building. So नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान. So this is where you have shops. Here you have shops over here. यहाँ पर shop है, and ऊपर आपका residential basically area है. So this is called as soft story structure. So soft story structure meaning that above you have residential blocks, but below you have shops. And if the earthquake comes, so this entire structure collapses. So this is referred to as pancake collapse. This is referred to as what? This is referred to as pancake collapse. Why? Because of oblique faulting. And this is a typical feature of which CC boundary. So if you see how soft story structure actually is, so this is rampant in North India. See, this is very much rampant in North India. आप हर जगह देखोगे तो आपको ये दिखेगा, नीचे दुकान रहते हैं, ऊपर आपका कोलैप्स हो जाता है. To prevent this, you have the building code of Japan. This is very important. So see this. Mention Shaishin and Taishin structure. तो ध्यान से देखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. चांद खुल गया. Yeah. Are you all able to see this diagram? Let me just open it up. Are you all able to see this diagram? Yes, I am explaining oblique fault. आप ये diagram देख रहे हो? तो देखिए, this is your Japanese building code. So Japanese building code, everyone is able to see the diagram, guys, please focus. So see, this is your Japanese building code, Taishin structure. So in Taishin structure, what do we do is that we use high steel strength. तो आप अच्छा steel strength use करते हो, तो इसके वजह से building की strength बढ़ जाती है. In Taishin structure, you do what? You do damping. So आप बीच में shock absorbers डाल देते हो building में. तो वर्टिकल डैम्पिंग होता है जिससे आपका बिल्डिंग स्टेबल हो जाता है अगर एल वेव आती है तो. एंड मेंशन स्ट्रक्चर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर टू मेक. हियर यू ऐड शॉकअप्स टू द बिल्डिंग. तो आप बेसिकली बेस को आइसोलेट कर देते हो विद द स्ट्रक्चर. तो दिस इज जस्ट लाइक एडिंग शॉकअप्स टू द बिल्डिंग. तो दैट इज व्हाई टू प्रिवेंट ऑल ऑफ दिस वी शुड गो फॉर व्हाट? टू प्रिवेंट ऑल ऑफ दिस वी शुड गो फॉर जापानीज बिल्डिंग कोड. Especially which structure? Especially your Menchin structure. So very important. Especially your Menchin structure.
In machine structure, we isolate the base using dampers. This is very, very important current affairs for 2025. So in oblique fault, you have horizontal plus vertical displacement both. Your foot walls go up, your hanging walls go down, but also you have vertical heave along with horizontal heave. Will you all remember this? सबको समझ में आ गया? So guys, here I wind off geomorphology for all of you. So arguably the biggest chapter in geography. So tomorrow onwards, I'll be starting off with climatology. So everybody come prepared. I'll be discussing with all of you the composition, the stratification of atmosphere. We'll be discussing the winds. We'll be discussing the temperature and pressure patterns of Earth. Okay. So you will be getting the PPT and also the lecture handouts from my end today after the lecture is over. Anybody, any difficulty, please ask me. Otherwise, give me the permission to end the lecture. Thank you. Okay, chalo. So thank you everybody. Have a good night. I will see you all tomorrow. Okay, bye bye. Anybody, any difficulty? Yes, I will upload